Good morning, everyone. Just wait. So our meeting is full. We'll go on Facebook Live. Just give me 2 minutes more. Okay. So great to see you, all of you, on the Saturday morning. Very good morning, all of you, and welcome from SNIC Rehab Foundation and from CRC. We are here in association with CRC. I'm Harshali Kharche and I'm from Nagpur. SNIC is basically based in Nagpur, and we welcome all of you. I'll just introduce SNIC briefly, that we are working in various areas like rehabilitation, empowerment, health advocacy, and belief. So we are here to empower parents and give their right direction towards the challenges they are facing in terms of children. So we are working on various areas in SNIC, that we are working on awareness program, parents empowerment program, various activities we are doing to empower our special children also. We touched upon various issues in financial advisory, and we also look on mental and physical health of the parents. So that is also very important to treat the child in overall term. So many more projects are on the pipeline. So let's move to the CRC. CRC is a Child Rehabilitation Center. It's a team of doctors dedicated to work towards overall development of the child. This organization, founded in 2009 by Dr. Sumit Shinde, they are physical centers in Mumbai, Nagpur, and 4 districts of Maharashtra, but they are serving overall globe from the online therapies. So it's a great honor to have Dr. Sumit Shinde on our platform. Today we are going to talk about basically what is speech communication that leads to social communication delay, or it's autism. Like, we are very much confused about this term. Many times we don't understand what is speech communication delay, or is it autism. So I'm sure you will get to know the clear idea about it after this webinar. And about our speaker, Dr. Sumit Shinde, he is renowned pediatric occupational therapist in the sector of mental health and disability rehabilitation and child development from last 15 years. They have conducted many workshops, training programs, and various multidisciplinary professional educated through their various activities and programs. I'm proud to say here, Dr. Sumit Shinde has got Youth Icon Award in 2019 by Times Group for contribution in its pediatric rehabilitation sector. And he also achieved Young Occupational Therapy Achiever Award in 2020 by IOTA. Many more awards. I mean, we have less time to spell it here.
So they have 8 centers in 4 districts of Maharashtra, Navi Mumbai, Thane, and Nagpur itself. So I want to welcome Dr. Sumit Shinde for further today's topic. Just one announcement, we are going to float the Google form. Who needs help, professional help from CRC, and any other question or feedback, you please fill up the form. We will float the link in the chat box. Thank you so much and welcome, sir. Over to you. Good morning, everyone. Let me get a picture. Am I audible? Yes. Okay. So let's talk about today's lecture. There is a uh, uh, every lecture has some motto. Every lecture has some kind of a clarity. Why we need to give this lecture. हर एक इंफॉर्मेशन देने के पीछे एक मोटो होता है. हर नॉलेज के पीछे मोटो होता है टू क्रिएट अवेयरनेस और टू क्रिएट अ क्लैरिटी इन द सोसाइटी. कोविड से पहले जो जब हम ऑटिज्म देखते थे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी था कि ओके दिस इज़ द डिसऑर्डर, दिस इज़ नॉट अ डिसऑर्डर. येट देयर वाज सम प्रॉब्लम्स. लेकिन कोविड होने के बाद एक एक नया प्रॉब्लम सबको दिख रहा है. दैट इज आई मीन very nicely they are calling it as a pseudo autism, you know. But there is no term called pseudo autism, there is no term called false autism. We can say, we can call it as a social communication delay. And you know, which looks like autism, but it's not actually autism. There are many cases. Out of 15 cases I'm seeing nowadays, out of which around 12 to 13 cases are like they are we are diagnosing it with social communication delay, where those parents have already told about, or most of them, if they are coming from uh, 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 coming with the diagnosis of autism, and then parents are already into the fearful mind. Parents are already trashed. Mother says that I didn't sleep since last 15 days, and we saw your lecture about what is autism and all. And then they come with they come for a second opinion, or just to know exactly what their child is facing. And let me tell you, out of 15 cases, around 12 to 13 are not autism. In fact, only 2 or 3 of them are diagnosed with autism. So that's why I felt that this is something, a topic which we need to bring awareness in the society. uh, क्योंकि अगर एक धब्बा लग जाता है कि ये ऑटिज्म है, देन देयर इज बिग प्रॉब्लम हैपेंस विद द पेरेंट्स माइंड, देन प्रॉब्लम हैपेंस इन द सोसाइटी. The professionals also don't start taking it as autism, and then the whole treatment direction starts with a lot of different things, और hype हो जाता है mind में. Then comes the school, और एक dilemma हो जाता है स्कूल के माइंड में कि बच्चे को यहाँ पर एडमिट करना है या नहीं करना है. सो ये बहुत सारा एक अनक्लियर पिक्चर है आजकल सोसाइटी में. सो आई फेल्ट व्हाई नॉट लेट्स अंडरस्टैंड what is the difference between social communication delay and autism. And also we are going to talk about in today's lecture is what is the difference between the speech delay and the social communication delay dysfunction in autism. और सबसे लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि why autism is not curable. And when we say why autism is not curable, that means it is curable, but how it is curable, that also we are going to speak about it. So let me share the screen. Yeah, is my screen available, visible? Yes. Right. So let me introduce today's topic: social communication delay or autism. It's nice to be on SNIC platform after a long time. So many lectures we have taken before, and I think many parents have got a clarity about mainly about autism and developmental disorders. So what exactly, why today's lecture is, I explained, there is a clarity to bring the clarity in the society about
about exactly what is the difference between one dysfunction in the autism which is called as a social communication dysfunction and social communication delay कि exactly यहाँ पर क्या होता है बच्चों में, कैसे इसको identify करना है, और I always say if you diagnose properly, if you evaluate the child properly, if you evaluate the function and dysfunction and look at the child's development rather than looking at the dysfunction, rather than being judgmental about child's behaviors and all, if we look at the positive aspects of it, every child will lead to a independent life, we can say. So post COVID cases of social communication pretending to be autism ये बहुत ज़्यादा हुआ है. I explained you already कि 15 में से तकरीबन 12 से 13 बच्चे जो हैं जो सोशल कम्युनिकेशन डिले में आते हैं. हालांकि उनका जो ऑटिज्म का जो रेटिंग अगर हम लोग करते हैं कि जब गार्स गिलेम ऑटिज्म रेटिंग स्केल पर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर हम लोग देखते हैं, जब थेरेपिस्ट वो बच्चे को ऑब्जर्व करता है वो टेस्ट पर, एंड जब पेरेंट उसको ऑब्जर्व करता है तो हमें बहुत सारे ऑटिज्म अलाइक फीचर्स दिखते हैं. वेयर एज ऑन अ सब्जेक्टिव एनालिसिस, जब हम सब्जेक्टिवली चाइल्ड को देखते हैं, सब्जेक्टिवली आफ्टर 5 और 10 सेशंस के बाद देखते हैं, तो वी गेट अ क्लियर पिक्चर कि एग्जैक्टली ओके दिस इज नॉट समथिंग कॉल्ड AUTISM, इट इज समथिंग कॉल्ड environmental factors which is affecting child's development. So exactly क्या होता है सोशल कम्युनिकेशन डिले में. जब बच्चा हमारे पास आता है तो कौन से फीचर्स हमें दिखते हैं. तो सबसे पहला फीचर है अफेक्टेड आई कॉन्टैक्ट विद स्ट्रेंजर्स. तो यहाँ पर आई कॉन्टैक्ट इज अफेक्टेड, डेफिनेटली इट इज अफेक्टेड, एंड जस्ट लाइक ऑटिज्म, जैसे ऑटिज्म में बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, वैसे सोशल कम्युनिकेशन डिले में भी बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है. लेकिन यह आई कॉन्टैक्ट डिले होता है स्ट्रेंजर्स से, एंड लेकिन पेरेंट्स के साथ ये बच्चे का आई कांटेक्ट अच्छे से होता है. तो जब पेरेंट्स हमें आके बोलते हैं कि बहुत बार आजकल स्कूल्स शुरू हो गए हैं, तो स्कूल्स हैव स्टार्टेड रेफरिंग केसेस, स्कूल्स आर क्रिएटिंग अलार्म कि ओके योर चाइल्ड इज नॉट शोइंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो आप किसी प्रोफेशनल को दिखाइए. तब जब बच्चा हमारे पास आता है और सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि आई कांटेक्ट करता है क्या, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आई कांटेक्ट तो करता है, लेकिन टीचर का कहना है कि आई कांटेक्ट बच्चा नहीं करता है. एंड देन देयर इज सम डायलेमा कि टीचर बच्चा हमें सुनता नहीं है, बच्चा हमें फॉलो नहीं करता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल कम्युनिकेशन डिले में, बच्चा आई कांटेक्ट पेरेंट्स से करता है और स्ट्रेंजर्स से नहीं करता है, क्योंकि उसको उतना, especially the age group of 3 years and 4 years, or let us say 2 years, 3 years and 4 years, ये कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनका आई कॉन्टैक्ट अफेक्टेड होता है स्ट्रेंजर्स से, बिकॉज दे डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी. नाउ देयर इज वन मोर इंक्लूजन ओवर हियर कि आई कॉन्टैक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो पेरेंट्स विद ऑटिज्म, जब ऑटिज्म का बच्चा होता है, एक्चुअली मुझे दिख रहा है कि वो ऑटिज्म है, इट्स नॉट अ सोशल कम्युनिकेशन डिले, वो पेरेंट भी बोलते हैं कि नहीं हमसे तो आई कांटेक्ट करता है, उसने तो आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से मैंने ट्रेन किया है. तो लेट मी टेल यू, आई कांटेक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन टू सोल्स. आई कांटेक्ट इज अ ब्रिज टू डेवलप अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल. आई कांटेक्ट इज नॉट विजुअल अटेंशन कि देखो मेरे पास, लुक एट मी, सी व्हाट आई एम सेइंग, ओके से एप्पल और से दिस. इट्स नॉट लाइक दैट. आई कांटेक्ट इज समथिंग लाइक I transfer my ideas, my beliefs, my abilities, my confidence, my intentions in all together by that bridge called eye contact. तो उसको हम लोग आई कॉन्टैक्ट कहेंगे. आई ट्रांसफर माई इमोशंस, आई ट्रांसफर माई एक्साइटमेंट, आई ट्रांसफर माई सरप्राइज, आई ट्रांसफर माई इंफॉर्मेशन, आई ट्रांसफर माई डिसीजन, आई ट्रांसफर माई डायरेक्शन to the child, and then the child understand or another person understands. दैट इज वो उस ब्रिज को वो कौन से माध्यम से अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो वो होता है आई कॉन्टैक्ट. लेकिन आई कॉन्टैक्ट इज नॉट विजुअल अटेंशन. सो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनको बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है और एक्चुअल ऑटिज्म है, तो वो बच्चों में भी आई कॉन्टैक्ट प्राइमरी सिचुएशंस में ट्रेंड हो सकता है. सो देयर इज दिस इज द डिफरेंस. इट इज नॉट आई कॉन्टैक्ट, इट इज मोर ऑफ अ विजुअल अटेंशन, ट्रेंड विजुअल अटेंशन. सो इन सोशल कम्युनिकेशन डिले. लेकिन सोशल कम्युनिकेशन डिले में अगर देखा जाए तो आई कॉन्टैक्ट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बच्चा बहुत अच्छे से रिसीव करता है, बहुत अच्छे से एक्सचेंज करता है आइडियाज़, लेकिन वो बहुत कम लेवल पे होती है, बहुत ही
डिलेड लेवल पे होती है तो इसको हम लोग डिले कहेंगे, इसको हम लोग डिस्फंक्शन नहीं कहेंगे. सेकंड इज अफेक्टेड रेसिप्रोसिटी विद अदर्स देन फैमिली मेंबर्स. सेम थिंग, इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल अराउंड, तो डेफिनेटली मैं मेरी देयर इज अ टर्म इन एरिक एरिक्सन्स थियोरी एंड द साइकोसोशल डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स का जो एक अल्गोरिदम है, उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का जो एक कॉम्प्लेक्स बताया जाता है बच्चों में, जो एक 1.5 साल से 2 साल के बच्चों में, लेट अस कॉल इट 10 मंथ से लेके अराउंड 2.5 साल तक, ये जो एक ये होती है कि चाइल्ड डेवलप्स अ फियर ऑफ सेपरेशन. इट्स नॉट सेपरेशन एंजाइटी, इट्स अ फियर ऑफ सेपरेशन कि आई डोंट वांट टू गो आउट बिकॉज दैट्स अ बेसिक सर्वाइवल फिनोमिना. तो जब कोविड के सिचुएशन में जब बच्चों को उतना इंटरैक्शन नहीं मिला, उतना उतना वो लोगों को नहीं देख पाए, लोगों को नहीं मिल पाए, जिसके वजह से भी बहुत बार ऐसे हो सकता है कि अफेक्टेड रेसिप्रोसिटी विद अदर्स दैन फैमिली मेंबर्स के साथ बच्चा बहुत अच्छे से कर पाता है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ वो नहीं कर पाता है. बहुत ही ऑटिज्म अलाइक लुक अलाइक सिचुएशंस वो दिखाता है. Delayed play stages is more about एक अल्गोरिदम होता है कि बच्चा पहले सेंसेस से वो चीज़ को समझने की कोशिश करता है. जब सेंसेस को इंटीग्रेट किया जाता है, वो इंटीग्रेटेड सेंसेस वो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट का महत्व देते हैं ब्रेन में, और वो फिर इमिटेशन प्ले होता है, सॉलिटरी प्ले होता है. उसके बाद सॉलिटरी प्ले बच्चा चीज़ों को इस्तेमाल करता है, चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है पेरेंट्स से, एंड देन चाइल्ड गोज टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज अ सिंबॉलिक प्ले, प्रिटेंड प्ले, एंड बहुत सारे प्ले के स्टेजेस है. ये स्टेजेस बच्चे में प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं बिकॉज इन लॉकडाउन देयर वाज अ बिग फोकस ऑन हेल्थ ऑफ द चाइल्ड दैन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. तो पेरेंट्स का एक्चुअली नज़रिया ज़्यादा बच्चों के प्ले पर नहीं था. बहुत सारे पेरेंट्स ने प्ले के नाम पर मोबाइल या स्क्रीन्स को बच्चों के हाथ में थमा दिया था, एंड देन ओके चलो खेल रहा है ना, चलो देख रहा है कुछ. तो उसकी वजह से बहुत बार देखा गया है कि बच्चों के प्ले स्टेज अफेक्टेड है. हालांकि सेम थिंग इज अफेक्टेड इन द ऑटिज्म ऑल्सो, एंड in fact we have given a wonderful results by working on this particular aspect also, that delayed play stages, if you identify properly, it will be it's a boom, and this definitely every child can do wonderfully if we identify this particular aspect. Next is lack of interactive play and supportive play. Okay, प्ले स्टेजेस, इंडिविजुअल प्ले स्टेजेस अलग होते हैं, ग्रुप प्ले स्टेजेस अलग होते हैं कि बच्चा ऑनलुकर प्ले दिखाता है, पैरेलल प्ले दिखाता है, सपोर्टिव प्ले दिखाता है, देन इंक्लूसिव ऑनलुकर दिखाता है, इंक्लूसिव पैरेलल होता है, एंड देन चाइल्ड बिकम्स इंटरैक्टिंग विद द सोसाइटी. तो ये जो अलग अलग प्ले स्टेजेस होते हैं, तो वो सोशल इंटरैक्शन की तरफ लेके जाते हैं बच्चे को. सोशल इंटरैक्शन ऐसे नहीं होते कि बच्चा बोलो से हाय, बोलो अंकल को हाय बोलो, जाओ उनके साथ खेलो, एंड हाँ भागो. ऐसे कभी भी सोशल इंटरैक्शन डेवलप नहीं होता है. सोशल इंटरैक्शन डिस्फंक्शन इज अ फेस वैल्यू ऑफ सम काइंड ऑफ अ डिस्फंक्शन इनसाइड इन द चाइल्ड, और वो डिस्फंक्शन होता है कि उसने प्ले स्टेजेस को ठीक से फॉलो किया नहीं होता है. तो ये जो प्ले स्टेजेस जो मैंने अभी बताया कि एग्जैक्टली वो ड्यूरिंग कोविड फेज के वक्त बच्चों का इंटरेक्शन नहीं हुआ, या वो सारे स्टेजेस का जो अल्गोरिदम है वो पास नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई द ब्रेन इज बहुत सारे बच्चों का जो ब्रेन है वो थोड़ा सा confused state में है कि exactly what we are supposed to do, because all of a sudden children are exposed to so many kids, and then those so many kids what they are doing, they especially out of 100 kids I'm seeing 15 to 16 kids are having social communication delay. तो जब ये 15 बच्चे जाते हैं वहाँ पर, then it is difficult for them to understand कि how to interact with those kids, because there is no brick, there is no plinth is developed of this play stages. Because let me tell you everyone कि child development is not based upon what you teach or what you train, or so many activities are happening. Child development is based on the play stages. It's very important to understand the psychosocial stages of development जो सीखने के लिए शायद 15 से 20 साल भी कम हो सकते हैं. इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंट स्टेजेस द चाइल्ड गोज थ्रू. So a lack of interactive play and supportive play is not about just child is supporting with each other and competing with each other. Its competition itself has a lot of iceberg theory. जो सामने दिख रहा है, जो बच्चा compete कर रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे competencies डेवलप होते हैं. वो बहुत बार हम लोग ध्यान में नहीं रखते. लेकिन इंटरैक्टिव प्ले एंड सपोर्टिव प्ले, ये इसके जो बच्चों को बेसिक
उसके उसके उसका जो एक इंटरवेंशन होना चाहिए, जो एक इंटीग्रेशन होना चाहिए सोसाइटी में, वो उतना ना होने की वजह से चिल्ड्रन आर showing lack of interactive play in terms of society and at the school. Child prefers to play alone because child is asked to play alone. Child is asked to not to go to others' house. Child is asked not to go and touch another kid. Child is asked not to play with another kids because of the fear in the COVID situations कि दूसरे बच्चे से मेरे बच्चे को शायद कंटामिनेशन हो सकता है. So the fear is transferred to the child कि फ्रॉम द पेरेंट्स कि नहीं 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 उसने बाहर नहीं जाना है, अगर बच्चे खेल भी रहे तो वो उससे दूर रहना है, टच नहीं करना है, एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड दैट्स the exactly the opposite learning is happened in the child's mind that I don't want to be with the kids, and all of a sudden जब वो बच्चा 4 साल का हो रहा है, 2 साल के बाद 3 साल का हो रहा है, वो प्राइमरी साइको सोशल स्टेजेस से जब वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, लेकिन वो प्राइमरी साइको सोशल स्टेज का उसमें कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेज विल डेफिनेटली फॉल्टर in the development, and child will show shy, timid or low confidence state in his own nature, जो अदरवाइज वो 15 बच्चों में से शायद 10 बच्चे शायद नहीं दिखाते या शायद नहीं फॉलो करते. या अगर मैं यहाँ पर एक पूरा एक ग्राफ निकालता हूँ तो ऑन द ग्राफ अराउंड अगर मैं 85 बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं और 15 बच्चे डिफॉल्टर दिखा रहे हैं, तो 85 में से भी 35 जो बच्चे हैं वो कहीं पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस का इशू या not able to come out of that comfort zone दिखाते हैं, and they may be lacking in some kind of a vocabulary, they may be lacking in some kind of a communication skills, they may be lacking in ideas, beliefs and thoughts which get exchanged during the various play stages. वो बच्चों ने ना दिखाने की वजह से शायद ये जो स्टेज आ रही है आजकल बच्चों में, that is a social communication delay. So just a moment. What are the reasons behind social communication delay? ये जो मैंने इसके reasons भी अभी पहले स्लाइड में बताया, लेकिन let's enumerate them. Lack of social interaction, बच्चों को उतना intervention नहीं मिला, उतना stimulation नहीं मिला सोसाइटी से. Lot of mobile exposure, and mobile exposure is something like you're dealing with a lot of visual localization. That means you're not dealing with a lot of visual tracking, visual sequencing and बहुत सारी चीज़ें जो हमारे विजुअल मोटर डेवलपमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विजुअल परसेप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल मोटर डेवलपमेंट के जो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं वो बच्चों को नहीं मिले, एंड दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज मोर एक्सपोज टू द ओनली विजुअल लोकलाइजेशन. अ वेरी स्मॉल फील्ड is become the child's world, and when the child is asked to child was exposed to 360 degree environment, child has started showing a lot of difficulties and defaulters. Limited vocabulary and conversation at home. पेरेंट्स हमें कितने सारे वर्ड्स पता है, अगर हम लोग बोलेंगे तो हम कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे 10,000 वर्ड्स पता है, कुछ लोग बोलेंगे मेरी आधी डिक्शनरी बाय हार्टेड है, कुछ लोग बोलेंगे 5,000, 4,000, 3,000, बट ऑन एन एवरेज हमें तकरीबन 3 to 4,000 वर्ड्स पता होते हैं. लेकिन घर में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए कितने सारे वर्ड्स हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, हमारे बच्चे के साथ एक्सचेंज करते हैं. हार्डली फ्यू, लेट अस से हार्डली 50 to 80. या जब मैंने एक 5 पेरेंट्स का एक स्टडी किया था रिसेंटली इन लास्ट 3 months, तो मुझे ये समझ में आया कि द पेरेंट हैव्स यूज्ड ओनली 80 to 90 वर्ड्स विद द चाइल्ड ऑन एवरीडे बेसिस. लेकिन बहुत सारे वर्ड्स जो इसेंशियल है, जो घर का ओरिएंटेशन डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, वो नहीं हुए वो बच्चों से, पेरेंट्स से, कि चलो खाना खाओ, चलो उठ जाओ, चलो सो जाओ, चलो देखो ऐसा हुआ, देखो चलो दाल रोटी बनाइए, चलो पनीर की सब्जी बनाइए, चलो खाओ, जल्दी जल्दी खाओ. यही सिर्फ चल रहा रहता है. लेकिन घर में वो बहुत सारे जो हमें वर्ड्स पता होते हैं जो घर में यूज़ करने चाहिए, घर में सेंटेंसेस को यूज़ करना चाहिए, वो कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं होते, जिसके वजह से चाइल्ड लैक्स इन लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी एंड लॉट्स ऑफ, भले वहाँ पर भी बच्चे को शायद वो 200 वर्ड्स पता है, लेकिन उसमें से शायद 10 या 20 ही बच्चा एक्सप्रेस कर पाता है. सो लिमिटेड वोकैबुलरी एंड कन्वर्सेशन एट होम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहाँ पर बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन डिले होता है. मुझे अगर
दोनों कैटेगरी के पेरेंट्स सुन रहे हैं, ऐसे में मान के चलता हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन डिले है लेकिन शायद उनको ऑटिज्म बताया गया है, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि एक्चुअली चाइल्ड इज ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑटिज्म। लेकिन ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि social communication delay is a part of autism, okay, but autism cannot be a part of social communication delay, okay. ऑटिज्म में सोशल कम्युनिकेशन डिले एक छोटा सा हिस्सा होता है, ओके, लेकिन सोशल कम्युनिकेशन डिले में ऑटिज्म होना ही चाहिए ऐसा नहीं है, ओके। मैंने उसका रेशो बताया है कि 15 में से शायद मेरे what I have seen in my own experience, hardly 2 to 3 kids have shown autism traits. Remaining 12 to 13 are showing lack of social communication. Then lack of play and communication, I explained you that child's basic occupation is a play and parents' basic occupation is a communication, which we follow at CRC more regular basis to develop n number of developmental aspects. We don't work on activity based skill training. We follow the child's basic occupation and follow the nature's law of and the law given by many scientists, which how the developmental algorithm moves ahead. Based on that, when we work on a child, we get an amazing result. Like exactly this is not followed at in last 2 years by the parents. Not followed is not you didn't do it. We didn't know that we are supposed to do it, or it didn't happen from our side because of our हमारा जो अटेंशन था वो कहीं और था, और जिसकी वजह से जो चाइल्ड का प्ले है उसके स्टेजेस में प्रॉब्लम आ गया, और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है उसके साथ जो जाना चाहिए उसमें भी डिले आ गया, एंड देयर इज अ lot of disconnection happened between the parents and children, because parents were in their own tensions and children were left alone with some gadgets, or pretending to okay they will do it later on. एक ऐसी स्टडी भी देखी है मैंने कि मास्क पहनने के वजह से बहुत सारे बच्चों को पेरेंट्स के एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते। इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है हमारे एक्सप्रेशंस, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन से ही हमारे इंटेंशंस पास ऑन होते हैं। लेकिन अगर मेरा इतना चेहरा ढका हुआ है और अगर मैं गुस्सा हूँ या मैं खुश हो रहा हूँ, तो ये सिर्फ आंखों से शायद बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, और आई विल नॉट बी एबल टू पास ऑन माई इंटेंशंस मोर क्लियरली। तो मास्क पहनने की वजह से, और बहुत बार आउटसाइड एनवायरनमेंट में एवरीबडी इज वेयरिंग अ मास्क, so children did not get enough stimulation from the people's expression. Typically developing children also didn't get expressions from the decision, because of which a lot of typically developing children developed social communication delay, and in fact that created a big impact on the autism children also, because autism child is more operating from the non-verbal communication. They are not operating from the verbal communication, and non-verbal communications to operate, I need some kind of expressions, and if those expressions that when the child doesn't get, definitely दोनों categories में problem हुआ है, in the regular kids also and in the children with autism also. That mask created a big barrier between exchange of expressions and exchange of non-verbal communication. शायद वही बच्चों ने ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया जो ट्रेंड है कमांड फॉलो करने में, या शायद जो जिनका रिसेप्टिव कम्युनिकेशन डेवलप्ड है। तो yes, there is a big lag developed in developing receptive communication. Receptive communication is a primary communication. When the child is not communicating, और child जब बात नहीं करता है तब उसको बोलने से ज़्यादा उसका वो कितना समझता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले साइड में डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो मास्क हाइडिंग एक्सप्रेशंस, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हो सकता है कि बच्चों को जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो वर्ड के पीछे जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो ना मिलने के वजह से डेफिनेटली चिल्ड्रन डिडंट गेट enough stimulation from the non-verbal communication, and there the lag developed in the receptive communication. And if the receptive communication is not developed, then it will not outflow, and that will get converted into the expressive communication. So that definitely इसका असर बच्चों के एक्सप्रेसिंग एबिलिटी पर हुआ है। एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई सेड द लिमिटेड वोकैबुलरी और कन्वर्सेशन घर पे होने के वजह से बच्चों के मैं क्या कहूँगा कि कॉग्निटिव एरियाज में उतने वर्ड्स ही डेवलप नहीं हुए, एंड देन चिल्ड्रन डेवलप द टिमिड एंड शाय काइंड ऑफ बिहेवियर्स कॉजिंग सोशल कम्युनिकेशन डिले।
व्हाट इज ऑटिज्म, इसके बारे में मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। ऑटिज्म कैसे होता है, ऑटिज्म का एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी देयर आर मैनी लेक्चर्स आई हैव टेकन ऑन द स्निक बिफोर, आई हैव टेकन ऑन द ऑन माई पर्सनल पोर्टल ऑल्सो, यू नो इट्स ऑलरेडी अवेलेबल। सो जिसमें सेंसर इंटीग्रेशन थ्योरी कैसे कैसे अफेक्ट होती है ऑटिज्म में, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस autism and its etiological factors, but today I'm going to discuss a lot of social communication delay, individual and autism as an individual entity. Last is parents transited fear to kids minds that interaction with other kids is harmful, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं क्या इंटेंशन सामने वाले को भेजता हूँ, मैं क्या वर्ड्स बोल रहा हूँ, ये शायद 2 साल के बच्चे को या 2.5 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को, अगर कोई ऑटिज्म का बच्चा है तो वो 8 साल का बच्चा है, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ ये ज़्यादा उसके मायने में नहीं रखता है। उसके मायने ये रखता है कि मैं क्या इंटेंशंस पास ऑन कर रहा हूँ, और ये इंटेंशन अगर बच्चे को नहीं समझ में आते तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स लॉट्स ऑफ, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ लैग इन चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। और बच्चे ने रिसीव क्या किया कि नहीं जाना है, डोंट गो देयर, डोंट गो आउट, नो टचिंग, नो शेयरिंग, नो टेकिंग हिज टॉयज एंड नो प्लेइंग टुगेदर, डोंट गो आउट, डोंट प्ले ऑन द स्लाइड, ऑलरेडी दैट चाइल्ड इज प्लेड ऑन द स्लाइड। Many medical lectures जब हमने देखे तो still today also there are many people are wearing the mask, even the government has said that you are not supposed to wear the mask, but still many people are, so वो जो fear है, वो एक anxiety है, वो अभी भी देखी जाती है। हालांकि I never come across any child got affected due to corona and then this thing में, ये मेरे सामने नहीं आया, शायद 1 or 2 cases or few cases must have happened, is maybe because of the comorbidities with corona, but not a single child affected in my visual, because we are having so many cases, so many contacts, so we didn't come across any child who suffered because of corona. So the thing over here, लेकिन बहुत ज़्यादा fear, तो what exactly suffering हुआ बच्चों पर, बहुत ज़्यादा fear pass on हुआ parents से, and that itself created a social dilemma कि अब मुझे बच्चों के साथ खेलना नहीं है and this things, and slow, but I'm seeing in my society also that children are slowly coming, you know, in the society, and but still few of them are still in a dilemma कि खेले या नहीं खेले, and parents are coming down and looking, now also parents are coming, और they say कि last month तक हमने बच्चे को बाहर ही नहीं निकाला, he was always at home and inside। लेकिन मैंने बोला सेकेंड वेव होके तो लास्ट जुलाई में हुई थी, थर्ड वेव भी शायद ओमिक्रॉन आया था, वो शायद दिसंबर या इसमें आया था, बट अगर तब तक अगर बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली आगे भी कुछ नहीं होगा, ये हम लोग मान के ही चलते हैं। हाँ, सो एंड it's all the whole treatment process of corona worked on a hypothesis only, so but let's not go towards that। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को वो इम्पॉर्टेंट खुराक, वो न्यूट्रिशन जो एक इंटरेक्शन से होना चाहिए, जो एक प्ले से होना चाहिए, वो ना मिलने की वजह से वी आर गेटिंग सोशल कम्युनिकेशन डिले इन मैक्सिमम चिल्ड्रन नाउअडेज। नाउ let's understand what is autism। Autism is the first primary most thing is come as a social communication delay। Okay, let me introduce, it's not delay, it's dysfunction। Okay, in autism it is not a social communication delay, in autism it is more of a social communication dysfunction। Yes, it is seen social communication delay in the children who have overcome their sensory processing dysfunction, and those children went into the exploration, inner exploration. I'm not talking about outside exploration, inner ability to explore about various senses, exploring touch, exploring visual, exploring sound, exploring movements। जो बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पर काम करने के बाद आफ्टर एफिशिएंट ओटी या प्रॉपर साइंटिफिक ओटी से काम करने के बाद जो बच्चों में एक्सप्लोरेशन की एबिलिटी आती है, वो बच्चे डिसफंक्शन में नहीं रहते, वो बच्चे हो जाते हैं डिले में। तो ऐसे हो सकता है कि द चाइल्ड हु कम्स टू मी इन द at the age of 4 years and who's showing the, let us say, social age like 1 year 8 months,
लेकिन वो 1 year 8 months is also contaminated with the social communication dysfunction, क्योंकि वो बच्चा 1 साल 8 महीने के नॉर्मल बच्चे की तरह भी नहीं बिहेव करता होता है, उसमें भी बहुत सारे डिस्फंक्शंस होते हैं, उसमें भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जिसके वजह से चाइल्ड इज नॉट ऑपरेटिंग, बट उस हिज एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज फिजियोलॉजिकल नीड्स के वजह से वो बच्चे का सोशल एज आता है 1 साल 8 महीने. सो it's not about if it is this bottle is 4 years old, okay, 4 years उसका एज है, लेकिन उसकी बच्चे की एबिलिटीज डेवलप हुई है 1 साल 8 महीने की तरह, लेकिन 1 साल 8 महीने में भी बहुत सारे डिस्फंक्शंस होते हैं. चाइल्ड में भी शोइंग लॉट ऑफ ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी, चाइल्ड इज शोइंग लॉट ऑफ स्टीरियोटाइपी, वर्बल स्टीरियोटाइपी, लॉट ऑफ विजुअल स्टीमिंग. ये चीजें होती है जो 1 साल 8 महीने के बच्चे में नहीं होती, ओके, टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड. So we need to understand that autism may, it's in the primary sessions, in the primary aspects में बच्चे का social communication dysfunction होता है. जब हम काम करते हैं उसके पर, जब हम प्रॉपर अल्गोरिथम आइडेंटिफाई करते हैं, वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशंस के बाद हमें समझ में आता है कि ओके व्हाट इज अ प्रायोरिटी, ओके दिस इज द प्रायोरिटी एंड दिस इज द प्रायोरिटी वी शुड वर्क अपॉन. इट कैन बी द biomechanical dysfunctions, it can be the behavioral dysfunctions, it can be a sensory processing dysfunction. Sensory processing dysfunction में भी बहुत सारे dysfunction, can be sensory modulation dysfunction, sensory registration dysfunction. इसके बाद आता है parenting, like where the parenting is having a cold parent, the parenting is not very much aware about the child development. Next comes the play stages, next comes is the psychosocial stages of the child. Next comes is a environment which is provoked to the child, and last में होता है कि what all the experiences the child has already encoded. ये बहुत सारी चीजें, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी होती है जब एक कोई ऑटिज्म का बच्चा हमारे पास आता है. इट्स नॉट जस्ट आई इज नॉट गिविंग आई कॉन्टैक्ट, तो चलो उसको आई कॉन्टैक्ट को ट्रेन करो, वो नहीं बात कर रहा है तो चलो उसको बोलने को ट्रेन करो. ही इज नॉट सिटिंग फॉर द स्टडी, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन अ सिटिंग टॉलरेंस. ही इज नॉट राइटिंग, सो क्रिएट अ राइटिंग प्रोटोकॉल. देयर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल, लेकिन it's not what the child is not doing. Autism is all about why the child is not able to do. If you work on that why, then automatically the child will be able to do all those things which you're trying to transfer, you know. So जब मेरे पास जब हमारे पास एक प्रोफेशनल के पास जब बच्चा आता है, तो we have to see he's 4 years old but he's showing social age 1 year 8 months. बट इन दैट 1 year 8 months में भी बहुत ज़्यादा डिस्फंक्शन है कि वो कितना सेंसरी प्रोसेसिंग डिस्फंक्शन दिखा रहा है, कितना मॉड्यूलेशन डिस्फंक्शन दिखा रहा है, और फिर उसका बेसिक एक्सप्रेसिव एबिलिटी और रिसेप्टिव एबिलिटी उसमें कहाँ पर वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह दिखाता है, या कहाँ पर हमें जाके वर्कआउट करना है, कहाँ पर जाके हमें वो बच्चे को कनेक्ट करना है. दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब एक थेरेपिस्ट रैपो बनाने के बाद वो बच्चे के सेंसरी प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूलेशन पर काम करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है सेंसरी डिस्फंक्शन इनटू सेंसरी एक्सप्लोरेशन. एंड जब ये सेंसरी एक्सप्लोरेशन के फेज में जब बचा जाता है, तब हमें दिखाई देता है क्लियर पिक्चर ऑफ अ 1 year 8 month ओल्ड चाइल्ड, यू नो, मे बी आफ्टर 4 months 6 months 7 months. तो बहुत बार मैंने अपने पिछले 15 साल के करियर में देखा है कि सोशल एज बहुत बार नहीं बढ़ता है. वो बच्चा 4 साल से 4.5 साल में गया, लेकिन सोशल एज वहीं तक रहा. एंड आफ्टर वंस द चाइल्ड वेंट इनटू द एक्सप्लोरेशन फेज, then the social communication dysfunction turned into the social communication delay. यानी कि अभी वो 4.5 साल का है, लेकिन वो बिहेव कर रहा है एक नॉर्मल 1 साल 8 महीने के बच्चे की तरह. एंड देन कम्स द एक्चुअल यू नो साइकोसोशल स्टेजेस को हमें काम करना होता है. तो ये बहुत ही सटीकता से करना होता है, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द इवैल्यूएशंस. और वो इवैल्यूएशन में व्हाट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, एंड व्हाट इज नॉट अर्जेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी द गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द सेकंड प्रायोरिटी, यू नो. सो ये सारी चीजों में से डिस्फंक्शन से हम लोग कम कर सकते हैं. एंड देन व्हेन द चाइल्ड गोस इनटू सोशल कम्युनिकेशन डिले, he will show features like social communication delay, which I shown you in the previous slide. So that is autism is not social communication delay, it is social communication dysfunction. Okay,
in which eye contact dysfunction is there, child is not responding to his name, child is showing auditory hypersensitivity, child is showing tactile sensitivity, child is showing under registration, over registration, hypersensitive, hyposensitive dysfunctions in the sensory processing, जिसके वजह से child is not able to understand the environment, and that's why the child is not able to communicate with the society. So that's all about autism, which is, ये थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि बच्चा सिर्फ बात नहीं कर रहा है, बच्चा सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ये नहीं है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ जो एक आइसबर्ग थियरी है, उसके जो पानी के नीचे का हिस्सा है वो डेवलप नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज, वी आर नॉट गेटिंग द सुपरफिशियल थिंग्स. सेकंड इज अ सोशल इंटरैक्शन डिसफंक्शन. मेनली I have seen in my career कि social interaction dysfunction is happening because of three major reasons. One is, actually, I'm making a big statement over here, not a single child in this world is having actually social interaction dysfunction. You know, कोई भी बच्चा जो ऑटिज्म से ग्रस्त है उसको सोशल इंटरेक्शन डिसफंक्शन एक्चुअली नहीं होता है बर्थ से. ओके, वो रोता है, वो अपने मम्मी को बुलाता है, हर एक बच्चे ने बुलाया था, हर एक बच्चे ने देखा था मम्मी को, हर एक बच्चे ने इंटरेक्ट किया था, लेकिन बाद में शायद 10 महीने के बाद, 15 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद ऐसी चीज हुई that the child started showing the lag in the social interaction. Okay, so तो वो social interaction lag क्यों आया? Because there is some kind of a dysfunction. उसके पीछे important कारण ये है. सबसे पहला कारण है जो नंबर 1 मैंने बताया, social communication dysfunction. Child is not able to receive the information from the environment, and that's why he's not able to create proper, or he's not able to transfer or get the ideas from the other people. Second important aspect behind social interaction dysfunction is the play stages. The child is not able to relate with another child. You know, the play stages is not activities. Let me tell you, parents, all those parents who are receiving my auditory signals, you know, play stages is not activities. You know, activity is the curse word for autism. Let me tell you, all the people who are actually operating from the child with activities, you know, and then and some certain puzzles and all those things, actually that is not a treatment of autism. It is just you are trying to work on a skills which you yourself don't know where to exactly use those skills in developing social functions and psychosocial stages of development. Social interaction dysfunction, सबसे important ये भी होता है, when the parent is not able to connect with the child, why the child will connect with the outside people. So mainly it's a very important aspect in the social interaction dysfunction in autism is parent himself is not connected with the child. Why the parent himself is not connected with the child? Because parent is operating the child is like a 4-year, or parent is waiting when the child will interact with me, or the parent is having some cold parenting, or parent himself is not that expressive, okay, or parent is very busy, or maybe what is happening in a nuclear family. That's why the social interaction dysfunction is happening. You know, mainly the child with autism 1 साल में actually उसमें social interaction dysfunction नहीं होता है. वो होता है क्योंकि हम लोग बाद में अपने अपने काम में चले जाते हैं, एंड देन चाइल्ड को अपनी दुनिया में छोड़ा जाता है. 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मदर also starts giving more attention to the cooking and other stuffs which she has missed out in last 1 year. It's nobody's fault, but I'm just telling you the circumstances where the child loses his social interaction after a certain age. Next is presence of repetitive behaviors affecting overall learning and social quotient. Repetitive behavior, hand flapping is not actual autism. Toe walking is not autism. Okay, child is looking at one corner of the eyes is not autism. Okay, these are the symptoms of autism. मलेरिया अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें फीवर आना, फीवर के साथ अगर हमें ठंडी बच के आती है या ठंड लगती है, ओके, 2-3 ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी हम उस ठंड को सहन नहीं कर सकते, दैट इज मलेरिया. ये एक्चुअल मलेरिया नहीं है. ओके, ये मलेरिया का सिम्टम है. ओके, अगर ये मलेरिया को अगर हम लोग सिर्फ ये सिम्टम को अगर ये सिर्फ पैरासिटामोल देकर या हाई पैरासिटामोल डोसेस देके अगर हम लोग उसको फीवर को दबा दिया, तो विल इट क्योर द मलेरिया? प्लीज पुट इट इनटू द चैट बॉक्स.
Okay, there are so many people feel that the symptom is autism. Symptom is a face value of underlying dysfunction. The underlying dysfunction is autism. Underlying visual motor dysfunction is autism. Underlying auditory hypersensitivity, auditory registration dysfunction, or auditory processing dysfunction is a problem. That's why the child is not speaking. Okay, so अगर ये dysfunction को अगर हम लोग नजरअंदाज करके सिर्फ ट्रेनिंग्स पर ध्यान देंगे तो we are giving 100% towards that 15 or 20% efficiency of the child, you know. But rather than that, if you work on the efficiency by going inside and by identifying those problems and working on it in a proper way, then the child's efficiency may increase to 50 to 60 or 70 to 80%. And then even your normal communication, normal interaction will also lead to a good transfer of your abilities, your thoughts, your skills, you know, all those, your personality, you can transfer it to a child after some time. In autism I'm talking about, you know. So presence of repetitive behaviors affecting overall learning and social quotient is autism. So I'm just taking the next level of all my lectures, because what is autism ये already मैं बहुत सारे lectures में बता चुका हूँ, but I'm just giving you the circumstances what exactly happens in autism and why the autism becomes more difficult than just social communication delay. Why it is difficult to differentiate between social communication delay and autism? जब ये कब हुआ, जब हमने वो सारे 15 के 15 बच्चों को जब हमने गार्स के साथ गार्स उनके ऊपर किया, तो हमें ये पता चला कि कुछ बच्चों में थेरेपिस्ट का स्कोर और पेरेंट का स्कोर सेम आ रहा था, यू नो. कुछ बच्चों में पेरेंट का स्कोर ज्यादा आ रहा था, थेरेपिस्ट का स्कोर कम आ रहा था. लेकिन थेरेपिस्ट का स्कोर में ऑटिज्म दिख रहा था, पेरेंट के स्कोर में ऑटिज्म नहीं दिख रहा था. कुछ बच्चों में पेरेंट का स्कोर बहुत ज्यादा ऑटिज्म की तरफ आ रहा था, थेरेपिस्ट का स्कोर शायद वो अच्छा आ रहा था, वो ऑटिज्म में नहीं जा रहा था. तो ये तीनों डायलेमास में दिखे. जो फर्स्ट वन वाज सेइंग कि therapist score and parent score is matching together, we can call it as more of autism. Second thing is parent score is better and therapist score is low, the child is showing social communication delay, social interaction delay, or whether we can say the social interaction delay is seen. That's why the child is not showing a better picture in the society. That's why the therapist is taking it as, or the professional is taking it as a dysfunction. But घर पे वो बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, तो घर पे वो बच्चे का रेटिंग बहुत अच्छा आएगा, सोसाइटी में प्रॉब्लम होगा. इसको हम लोग सोशल इंटरैक्शन डिले कह सकते हैं. तो सोशल कम्युनिकेशन डिले में भी दो चीजें हो सकती है, सोशल इंटरैक्शन डिले एंड सोशल कम्युनिकेशन डिले. एंड थर्ड थिंग इज द थेरेपी स्कोर वाज बेटर एंड पेरेंट इज गिविंग more stakes to that. It is mainly because when the age of the child is gone beyond 4 years, okay, जब बच्चे का एज 4 साल के बाद जाता है, बिकॉज ऑटिज्म डायग्नोस किया जाता है 3 साल में, उसके बाद 1 साल में भी शायद अवेयरनेस नहीं हुआ, देन द चाइल्ड शोज लॉट ऑफ लैग इन टर्म्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन. क्योंकि अभी उसको स्कूल में भेजा और स्कूल में कुछ भी बात नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो लैग दिखाता है, बहुत सारा पेरेंट्स टीचर्स की तरफ से कंप्लेंट्स आता है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है. एंड ऑल ऑफ अ सडन पेरेंट्स की आंखें खुलती है एंड देन पेरेंट्स स्टार्ट्स जजिंग द चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, यू नो, ऑब्जर्विंग द चाइल्ड. एंड उसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, और उसका जब हम रेटिंग्स करते हैं तो पेरेंट्स का रेटिंग बहुत ज़्यादा आ जाता है. और टेस्ट भी ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप एज करोगे उतना, अगर उसमें उतना कम डिस्फंक्शन आएगा तो वो गैप बहुत ज़्यादा होगा, अगर जल्दी करोगे वो टेस्ट को, वो गैप कम होगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट, you know, all of a sudden the child starts showing autism in parents mind. But when the therapist sees it, और therapist जब interact करता है बच्चों के साथ, वो interaction में बच्चा ठीक ठाक होता है, 2-4 सेशंस के बाद बच्चा अच्छे से करना शुरू करता है. because we do this testing after 5 to 8 sessions, sometimes we take 10 or 12 sessions or so when the child is not cooperative, you know. After that we do this tests, because we don't want to be judgmental about the child's dysfunction. We want to understand the child's development, the hidden development, because that we want to give more stakes. So we give enough understanding कि बच्चा exactly क्या कर पा रहा है, and then we see, you know, the child is actually having a better abilities, लेकिन वो parents को भी inabilities दिखती है. तो ये तीनों भी scores होते हैं, ये आजकल हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. And then we understood कि okay, there is some term is some inherited, or let us say some acquired problems are coming with respect to social communication delay, social interaction delay, and the third thing is
pure autism, we can say. Why it is difficult to differentiate between social communication delay and autism? सबसे पहला है lookalike symptoms. Symptoms दोनों भी same होंगे. If any new therapist comes and अगर book में लिखा है तो book में exactly same चीजें लिखी है जो मैंने social communication में delay में भी दिखाई है, दी है, तो वो lookalike symptoms होंगे, you know. Then diagnosis is done on short period observation. बहुत बार ऐसे होता है कि प्रोफेशनल शायद 10-12 मिनट देखता है और उसके बाद धड़ाम से बॉम्ब फोड़ देता है कि ओके द चाइल्ड इज हैविंग ऑटिज्म, यू नो. It's not like that. We have to, if we are sure, if you have seen all the aspects of the child, we have discussed with the parent in depth, we have seen the child, we have seen the if we know the psychosocial stages of the development, and in that if we scan it, then we can say we should say the child is this thing. Otherwise we have to most of the time we have to say we need to check whether where the symptoms falls on a test or in the subjective analysis. क्योंकि शायद पहला दिन है, बच्चा आया है, वो वहाँ पर उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इंटरेक्ट नहीं कर पाता, and all of a sudden, you know, the professional gives a verdict, you know, the child is showing ASD or autism and all those things. So diagnosis is done based on short period observations. That's why ये एक डिफिकल्टी है ये दोनों चीज़ों में. अगले एक साल तक मैं कहूँगा कि in one session, in a short observation, not one session can be 1.5 hours, and then the professional is checking all the aspects of the at home, in the environment, in the school, and then talking to the parent, and parent is synergistic, and then we can say okay, this is something like autism. But if the what parent is saying and if the child is showing, if this pictures does not match, okay, we should give few days to for the observations, for the subjective analysis. That's why the diagnosis is when it is done in a short-term period. That's why nowadays everybody is called as autism. Third thing is parents are over-educated themselves from the various social media and using the same vocabulary like professionals to express autism in social communication delay. Parent comes and straight away says okay, he's having some tactile dysfunctions or he's having some these things. अगर एक you know, तो बहुत बार as a professional मैं बोलना चाहूँगा कि जो पेरेंट मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने बच्चे के साथ खेलने की, लेकिन वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहता, यू नो, वो मैं बहुत ही ट्राई कर रहा हूँ वो मुझे पापा बोलने की, लेकिन वो मुझे पापा नहीं बोलता है, वो मुझे मम्मा नहीं बोलता है, मैं खुद उसके साथ बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा है, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट. दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम. This is a genuine query, this is a genuine challenge the parent is facing about his own child, where the parent is actually saying, I am not able to connect with my child, or my child is not able to connect with me. You know? But when in just 1-2 minutes, when I say, what are your chief complaints? And then parents are saying, oh, he's having some sensory issues, and then he's having some expressive communication dysfunction, and he's having some these things. So that is more judgmental. I feel that should not. Out of 100 parents, I will say 95 parents come from the Google and they try to say all the symptoms written over there, and they try to say those are the dysfunctions. But actual dysfunction in autism, my child is not able to connect with me, or mainly I am a normal person, I am an educated person, I am an experienced person, and I try my best in the world. But yet I am not able to communicate with my child, yet I am not able to connect with my child, is the real chief complaint, should be the chief complaint in any kind of a thing, both social communication delay or autism, you know. And last is I explained that child scores high on autism rating scales on an increased autism index. So yes, क्योंकि ये जो टेस्ट बने, अटैक बना है, CARS बना है. CARS is more of a subjective, GARS is more of an objective, and since we work more on parenting, so we must understand, we want to understand how a parent looks from his goggles about a child in those tests, because we want to work on parent. We focus more on parenting, we focus more on child's developmental aspects than working on dysfunction. Dysfunction is very simple to work upon, but we give more focus on parenting because that is the highest level we can achieve the improvements. लेकिन ये जो सारे टेस्ट्स बने हैं कुछ सालों पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, या उसमें जो इम्प्रोवाइजेशंस आते हैं वो बेस टेस्ट के ऊपर ही होते हैं.
वो टेस्ट में कोरोना जैसा पीरियड के बारे में नहीं लिखा गया था, जिसके वजह से इन लास्ट 2 years when the children did not get enough stimulation from the environment, तो वो children are showing like symptoms of what we are seeing in autism, and that's why the test will quickly identify okay this is autism. जैसे कोरोना के टेस्ट में भी बहुत सारे लोगों को कोरोना नहीं था, फिर भी टेस्ट ने बता दिया कि द द पर्सन इज पॉजिटिव, और उसको फोर्सफुली क्वारंटाइन करते थे. So yes, it is difficult sometimes, but if we see properly, if we understand properly, if we give more importance to the development than the dysfunction what the child is showing, which is a face value of some kind of underlying this thing, underlying issue. Okay, अगर हम लोग डेवलपमेंट को देखते हैं तो बहुत अच्छे से उसमें हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ओके दिस इज ऑटिज्म एंड दिस इज just a social communication delay. One more thing is happening, a very very demarcating factor होता है, वो होता है repetitive behaviors और stereotypical behaviors. कुछ बच्चों में मैंने एक्चुअली वो भी देखे कि हाँ ये बच्चों में कुछ तो फ्लैपिंग जैसा चीज़ें हो रही थी, या कुछ बच्चे hands के साथ खेल रहे थे. It is mainly because the motor skills were not generalized in the in last 2 years, and that's why also the brain body connection, the body awareness is not well developed, and because of that the child may show some kind of a stereotypy which quickly goes after a few sessions. The child starts showing the reversal in those symptoms. So why it is important to differentiate between autism and social communication delay? Why I'm here? Why I'm talking this? Why we are not taking everything at the one level? It is not supposed to be, because every diagnosis, every problem is different. Although looks alike, even hand flapping has looks alike in two children, लेकिन दोनों का शायद इटियोलॉजिकल फैक्टर अलग हो सकता है. कुछ बच्चों का हैंड फ्लैपिंग विजुअल स्टीमिंग हो सकता है, विजुअल स्टीमिंग के साथ हो सकता है, और कुछ बच्चों का हैंड फ्लैपिंग जस्ट जॉइंट अवेयरनेस इशू हो सकता है, और कुछ बच्चों का हैंड फ्लैपिंग हो सकता है प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से और पोस्चरल मसल वीकनेसेस की वजह से. सारी चीज़ें सेम दिखेगी, लेकिन एक्चुअली इवैल्यूएशन में समझ में आता है कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज, एंड इफ यू अंडरस्टैंड what the etiological factors are, it's very simple to work on those protocols. So different diagnosis, different protocol, and different treatment methods, different diagnostics, and different prognostic modules also. In social communication delay, we can keep a very high end goals, and quickly we have to work on very short term and very fast process पर काम करना होता है, and we just have to integrate the child into society within 6 months or within 3 to 4 months. I've seen some kids have improved within 10 to 15 sessions, and we ask them okay, now the child is absolutely fine, you can go ahead. But in autism, no, we have to be careful, we have to be observant. Sometimes the observation goes for one month also. Maybe in 15 or 16 sessions we establish our observation कि okay, this is exactly the problem is, and this is the thing which we have to start. Where to start from? Autism is all entangled thing. Okay, धागे की रस्सी की जब नॉट्स ओपन करने होते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होता है कि वो रस्सी का पहला वाला मोड़ कहाँ पर है, और वहां से वो रस्सी हम लोग ओपन करते हैं. तो इन ऑटिज्म वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द प्राइमरी मोस्ट डिसफंक्शन इन द चाइल्ड, रादर देन लुकिंग एट जस्ट सिम्टम एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. Why I'm forcing on this? Because in last 5 or 6 years, there's a lot of incorrect things are happening in this field, which will lead to a very bad burst out in coming few years. ऐसे हो सकता है. So different diagnosis, different protocol, and different treatment methods, ये सबसे important है कि जब एक autism का बच्चा आता है तो I have to go slow. I may say the child should develop eye contact in coming 1.5 month, or coming 10 or 15 sessions में ये बच्चे का eye contact बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए. If it is social communication delay, I will tell the therapist मुझे इसका eye contact अगले 3 sessions में ही होना चाहिए. अगले 3 sessions में मैं चाहूँगा कि ये बच्चे खुशी तुम्हारे पास आना चाहिए. That's really important. लेकिन अगर हम लोग ठीक से डायग्नोज नहीं करते हैं तो फिर शायद गोल्स वेरी हो सकते हैं, and definitely our way of our pace may affect in developing that child. So then second thing is why it is important to differentiate autism, because we want to, it's our responsibility to create that
to create that awareness or sensitizing the society with the right things. When you say pseudo autism, that means there is autism. Okay, pseudo autism is not a right word to call this kind of dysfunction. There is a social communication delay. Let's call it as a very simplified format में ये करें. Otherwise, there are many people are actually facing problem in the schools, that schools are becoming more skeptical and denying the admissions based on the child is not doing this, and like child is not interacting, or child is not showing adequate compliance during the meets, early meets and all. And उनको बोला जाता है कि the child is having autism straight away. Nowadays teachers also, the child is having autism. Okay, which is not right. The teachers, the school professionals or schools, this thing they say that the child is not giving eye contact, the child is not able to connect, we are trying to connect with the child but he's not able to do this. Why don't you show your professional? लेकिन वहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा आजकल मैं देख रहा हूँ, स्ट्रेट अवे लिखा जाता है, वो बोला जाता है कि चाइल्ड को ऑटिज्म है और आप थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट करो, which is a big big trauma for the, it can be a big trauma for the parents, क्योंकि जैसे टीचर ने बोला वैसे वो पैरेंट जाके गूगल पे देखता है कि वो what is autism, and then that becomes a problem. So yes, when this kind of children comes to me, we have a different way of giving a letter to the school कि though it's not autism, it's somewhere it is because the environmental factors have affected the child's overall abilities, and why don't we give another look. And there are many schools have identified, and many schools have given a second chance to baby after 1 month, and the children have started showing better children got admitted in that particular school. So yes, but the जो धीरे का झटका जो जोर से जब लगता है, तो everybody is becoming skeptical, and then that sometimes that problem does not affect the child, but that problem affects the parent. मैंने देखा है कि in autism में भी मैंने देखा है कि बच्चा ऑटिज्म से बाहर आया है, लेकिन वो जो पेरेंट है वो अभी तक ऑटिज्म से बाहर नहीं आया है, वो अभी भी ऑटिज्म का जैसे ही सोच रहा है और ऑटिज्म को ही ये कर रहा है, छोटे भी प्रॉब्लम को उसमें प्रॉब्लम ढूंढ रहा है बच्चे के. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इट इज़ अ बिग ट्रॉमा ऑन पेरेंट्स माइंड. सो आइडेंटिफाई with a proper professional, with the testings, and give some time and check it out whether it is the disorder or dysfunction, or it is delayed function. Then as I said, out of 10 social communication delay, two shows autism. 10 बच्चों में से 2 शायद ऑटिज्म दिखा रहे हैं. ये मैंने बाहर से लिया है, लेकिन मेरा नंबर है 15 में से शायद 2 या 3 बच्चे ये दिखाते हैं. The number is same, almost same we can say average we are getting. Autism is a neurological dysfunction and social where the brain is not able to receive the sensory inputs in an appropriate way, and is not able to encode and not able to create the higher functions based on those inputs. And that's why the picture, what he's seeing in the environment in picture, is what is getting created inside the brain is not same. Okay, but whereas social communication delay is not the neurological dysfunction, it is just a neural delay somewhere here and there, and the big environmental factor is affecting the brain's development. So autism is an internal phenomena, social communication delay is an external phenomena. One more thing, social communication delay in autism is also an external phenomena. Okay, because somewhere in recently I have taken a lecture in Guwahati, half an hour ka lecture hai. You all must see कि exactly what do you mean by parenting. मैंने वहाँ पर बोला है कि be it autism or be it any child in the world, what is exactly parent का role क्या होना चाहिए और क्या होता है. अगर हर एक parent अपना role अगर properly follow करे, तो there will not be a social interaction dysfunction will remain in term called autism. Believe me, just see that lecture. It's just a half an hour lecture.
and I've explained there what exactly is a parenting. So what do you mean by parenting? It's external factor. External factor dealing with the child's development, and parenting is, let us say, 95% of it. This is, it is pretended and marketed increased number of autism in society by some creatures. I call them as creature, just to India is a big market since thousands of years, and now it has become a big market for all developmental disabilities. Also, it is a big market for, to you can buy, you can buy anything and you can sell anything over here. There is no ethics, there is no regulations, there is no law for to regulate all this. So by increasing the fear in the people's mind, is actually everybody selling their unwanted treatments, and which is they themselves don't understand, they themselves don't know what kind of a impact on people's mind they are doing by saying that autism number is increasing, or autism problem is increasing the society. It is not increasing. It is definitely environmental factors which are affecting social communication delay and all. Okay, so be aware of those people who are actually unnecessarily diagnosing and unnecessary things and unnecessarily creating a havoc about autism. So now coming to a lecture. So I hope everybody's understood about what is social communication delay, and what is a difference between delay and autism. The second thing is, this is really very important for all the parents who are suffering from autism, actual autism in the children. This is really important because I feel there's a mixed picture, and many people are attending this lecture on autism. So I felt कि why not add this particular thing also in this lecture, that is the difference between speech delay and autism. The difference, जो बच्चा बात नहीं कर रहा है और autism में क्या फर्क है. अगले लेक्चर में हमने बोला था बच्चा बात तो कर रहा है लेकिन वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन और उससे ऑटिज्म का क्या फर्क है. So what is the difference between speech delay and autism? There are n number of speech disorders, speech and communication disorders. Just a moment. So there are n number of speech disorders. Okay, we can call it as, which is not autism. Okay, first is speech dyspraxia, speech apraxia, where the motor aspects of the motor learning is not happening in the speech apparatus. Okay, there can be a tongue movement issue, there can be these things which a speech therapist will tell us better. Okay, but in autism, it is not a speech disorder, it is a communication disorder. And let me tell you, in communication, speech matters only 7 to 8% or 7 to 10% in the early childhood development. If you see a child of 0 to 2 years old child, कितना ज़्यादा बोलता है. Let's take a neurotypical child, कितना ज़्यादा वो बात करता है और कितना ज़्यादा वो रिसीव करता है. 8 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा continuously is receiving and receiving expressions, receiving intentions, receiving expressions, receiving fear, receiving happiness, receiving excitement, receiving surprise, receiving disgust, receiving anger also sometimes. जानबूझ के कुछ चाचा या मामा बोलता है ए, and then the child gets receives that thing and starts reciprocating after some time. कितना रिसीव करता है. अगर आप देखेंगे कि वो रिसीव कितना करता है और कितना देता है, तो एक 2 साल तक, 0 से 2 साल तक एक न्यूरोटिपिकल बच्चा तकरीबन 98% वो रिसीव करता है और शायद 2% वो बोलता है या एक्सप्रेस करता है. Do you all agree with me? Please put it in the chat box. Maybe this is the first lecture
आई एम टेकिंग इट जस्ट वन साइडेड. प्लीज पुट इन योर चैट बॉक्स. 2 साल का बच्चा, अगर आपका सिबलिंग है, आपने किसी बच्चे को देखा है, बचपन से हमने बहुत सारे बच्चों को देखा होता, ओके, कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चा रिसीव बहुत ज्यादा करता है, एक्सप्रेस बहुत कम करता है. प्लीज पुट इन योर चैट बॉक्स, लेट मी टेल यू. राइट. और जब ये रिसीव करता है, जब ये 100% रिसीव करता है, जब इसमें भर रहा है, उसके बाद एक टाइम आता है कि आउटबर्स्ट होता है, और 2 साल के बाद ये बच्चा बात करना शुरू करता है. कभी कभी ये रिसीविंग एबिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है, और कभी कभी 1 साल में भी बच्चा बोलना शुरू करता है. बहुत कम चीजें बोलता है, लेकिन वो बच्चा भी बहुत ज्यादा रिसीविंग मोड में होता है. I'll tell you few people, I'll tell you not few people, you go to all those people and जो सक्सेसफुल है, जो कम बात करते हैं, जो कम बात करते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल है. कितने सारे लोग हैं, प्लीज पुट, आउट ऑफ 100 सक्सेसफुल पीपल, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कम बात करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. If you see many successful people, they speak only for their work, they speak only for their these things. Yes, around 80%, 80-90% people speak less, but they what exactly do they do? जब exactly क्या करते हैं वो लोग, जब वो कम बात करते हैं, उस वक्त वो actually बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं सामने वाले के intentions, सामने वाले के exactly उनका क्या कहना है, उनके एक्सप्रेशंस को वो रिसीव करते हैं, और वो रिसीव करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, समझते हैं, और फिर शायद 2 बातों में, शायद 4 बातों में, शायद 2 सेंटेंसेस में दे मे कंप्लीट अ डील, और दे मे कंप्लीट देयर होल थिंग्स, एंड देन सब कुछ हो जाता है. लेकिन कुछ लोग बातें करते बहुत, आई मीन मैं भी बातें करता हूँ, बट आई एम वर्किंग फॉर, आई स्पीक ओनली व्हेन आई वर्क, बट इफ यू सी मी अलोन, I prefer to be introvert most of the time, but it's very important they keep talking a lot in friend circle in this, and बहुत ज़्यादा ये करते हैं. उसमें वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है जो unnecessary होती है, जो सिर्फ blurting होता है, जो सिर्फ unnecessary truly speaking with respect to unnecessary their emotions burst होते हैं, thought burst होते हैं, जो शायद आधा ही होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन को ही पास ऑन करते रहते हैं बहुत सारे लोग. एक्चुअली दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. कमिंग बैक टू ऑटिज्म एंड स्पीच, हर एक बच्चा 2 साल तक बहुत ज्यादा रिसीव करता है. बहुत सारे बच्चे जो 3 साल तक बात नहीं किए, ओके, जो शायद 3 साल तक बात नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने रिसीव करके उनके हायर फंक्शंस, लाइक जो मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूँ, उनका मेमोरी स्किल्स, उनका नॉट मेमोरी स्किल्स मीन्स हाउ आई रजिस्टर माय गुड एक्सपीरियंस एंड हाउ आई रजिस्टर माय बैड एक्सपीरियंस. आई ओनली कॉल्ड एज अ memory skill. Okay, memory skill does not mean memorizing 4 words and 5 words and all those things. Those are the cognitive skills. Okay, so वो बच्चा कैसे एनकोड करता है गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस को, वो कितना ओरिएंटेड है आजू बाजू के व्यक्ति, वस्तु, जगह, प्राणी, सिचुएशन, एक्शन, देखकर, सुनकर, टच करके, टेस्ट करके, मूवमेंट से वो कितना एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो कितना थिंकिंग करता है कि ये जो सामने हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो एनालाइज करता है अपने से. बात नहीं कर रहा है लेकिन एनालाइज कर रहा है. वो कितना इमेजिन करता है अपने खेल में, कुछ तो बनाता है, कुछ ये करता है, बात नहीं कर रहा है, सिर्फ आके दिखाता है. कितने सारे आपके बच्चे हैं जो शायद बात नहीं कर रहे. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म नाउ. कितने सारे बच्चे बात नहीं कर रहे, बट यू फील दैट दे आर एक्चुअली रिसीविंग. इट्स अ गॉड्स ग्रेस. बिलीव मी, योर चाइल्ड has all the way to go ahead in the life if you don't give importance to the speech, and if you give importance to only the exchange of intention and exchange of communication, then every child has the ability to go ahead in the life. Although my slide is different, but I just took this topic ahead with respect to receptive communication. So autism में speech delay child is a good in receptive verbal communication. जो भी बच्चे लेट बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, वो
2.5 साल तक नहीं बोल रहा था, 3 साल तक नहीं बोल रहा था, तो हमने वो सोचा कि मैं भी लेट बोला था तो मैं शायद बाद में ये बात करेगा। लेकिन मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ, बात नहीं करना और जो की हुई बातें हैं वो ना समझना, ओके, और फिर बात नहीं करना, इसमें फर्क है ना? सो इन स्पीच डिले चाइल्ड, the child is good in receptive verbal communication, and in autism, you know, the autism child, every autism child except the 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 severe to profound intellectual dysfunction with autism children, I am just keeping them aside, अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट लेकिन जो बच्चों का शायद ऑटिज्म को छोड़ के जो जो उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी 70 एंड अबव होता है या 55 एंड अबव हो जाता है, आई विल कॉल देम ऑल द किड्स आर गुड इन रिसेप्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, okay, receptive verbal communication, receptive non-verbal communication, they are good in, that is seen in better in autism, okay. So बच्चा बात नहीं कर रहा है is good in receptive verbal communication, बच्चा बात नहीं कर रहा है इन ऑटिज्म, दे आर गुड इन रिसेप्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये जो बच्चा बात नहीं कर रहा है, जो स्पीच डिले है, वो बच्चे ने रिसेप्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्टेज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, सिर्फ वो बातें समझ रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, ओके। सो बॉटल ऑलमोस्ट भर चुकी है लेकिन वो बात नहीं कर रहा है। लेकिन ऑटिज्म में वो यही तक है, अभी तक उसका रिसेप्टिव वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही डेवलप हुआ है, लेकिन रिसेप्टिव वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होना बाकी है, ओके। इसको ध्यान में ना रखेंगे तो ऑटिज्म लाइफ टाइम के लिए अनक्यूरेबल रहेगा। लेकिन अगर इसको आप काम करेंगे अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, रिसेप्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, चाइल्ड विल स्टार्ट स्पीकिंग और नॉट स्पीकिंग, दैट्स नॉट द डेस्टिनी, बट द चाइल्ड विल बी डेफिनेटली नॉट बी शोइंग ऑटिज्म, दैट विल बी हिज डेस्टिनी, लेट मी टेल यू दैट, ओके। सो along with difference between speech delay and autism, मैं ये actually express करना चाहता हूँ कि what should be the decision making, how, where we need to understand where we stand in on the ladder of autism development, or stand on a ladder of psychosocial development of a child. If we follow the psychosocial development and not just the dysfunction and working on a dysfunction, every child can slowly but steadily will climb the ladder, and it will move ahead in the life very efficiently, okay. So if we keep our expectations away and if we just give attention to the 3 aspects of autism, that is a social interaction dysfunction, social communication dysfunction, and presence of repetitive behavior, I hope you people are understanding me what I'm trying to say. I hope you people are understanding. Let me put in the chat box, are you all understanding me? Oh, that's great. That's great. Yes. Thank you. So these are 2 different terminologies. Speech delay, बच्चा 3 stages है. Receptive non-verbal communication के बाद आता है receptive verbal communication, उसके बाद आता है expressive communication. Autism का बच्चा receptive non-verbal communication में ही अटका है, शायद 1 साल का, शायद 8 महीने का, शायद 1.5 साल का, लेकिन उसका रिसेप्टिव वर्बल कम्युनिकेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है, ओके। तो ये चीजें पहले अगर डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ये डिफरेंस है ऑटिज्म में और स्पीच डिले में, ओके। तो जब वो बच्चे को इनफ एनवायरनमेंट मिलता है, स्पीच डिले के बच्चे को इनफ एनवायरनमेंट मिलता है, स्कूल जाता है तो बहुत सारी चीजें सुनता है, एक्सप्रेस करना होता है, अर्ज क्रिएट होती है कि मुझे बोलना है, मुझे एक्सप्रेस करना है, और वो बच्चा बोलना शुरू करता है 3 साल, 3.5 साल, 4 साल में। ऑटिज्म का बच्चा जब हमें पता होता है कि 3 साल का है और वो बोल नहीं रहा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली उसके बोलने पर काम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम ये नहीं सोच पाते कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसफंक्शन, रजिस्ट्रेशन डिसफंक्शन, मॉड्यूलेशन डिसफंक्शन, सेंसरी नहीं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मॉड्यूलेशन और डिसफंक्शन के वजह से वो बच्चे ने सेंसरी रिसेप्टिव कम्युनिकेशन में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया है। शायद अगर वो ऑडिटरी डिसफंक्शन के साथ अगर विजुअल ऑक्यूलर रिफ्लेक्स और अगर विजुअल मोटर डेवलपमेंट में अगर प्रॉब्लम है, तो फिर तो वो बच्चा आपके रिसेप्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी पीछे रहता है, क्योंकि वो ठीक से आपको देख ही नहीं रहा है। एक्टिविटी ठीक है, लेकिन वो ठीक से आपके एक्सप्रेशंस को ठीक से एनकोड ही नहीं कर पा रहा है। तो डेफिनेटली हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है
कि ऑटिज्म ट्रीटमेंट में ना तो स्पीच को देखो, ना तो हैंड फ्लैपिंग को देखो, ना तो टो वॉकिंग को देखो, ना तो अपनी दुनिया में रह रहा है वो देखो, लेकिन ये देखो कि वो बच्चा कितना अच्छे से विजुअल मोटर एस्पेक्ट्स पर काम कर रहा है। विजुअल मोटर एस्पेक्ट्स पर काम करने के बाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विजुअल परसेप्शन फॉर ऑल दोस people who are working on scanning and sequencing and all those things. This visual perception is the function of a visual acuity. Visual motor development is a developmental psychosocial development aspect, anatomical and the physiological aspect of the visual development I am talking about. Okay, so yes, this is very important कि स्पीच डिले इज वन ऑफ द क्राइटेरिया इन द साइकोसोशल डेवलपमेंट। वो यहाँ पर आता है, ऑटिज्म का बच्चा यहाँ पर है, अगर उसकी विजुअल मोटर डेवलपमेंट नहीं हुई है तो ये रिसेप्टिव इंटेंशन से भी नीचे गया है, तो वी हैव टू वर्क ऑन विजुअल मोटर डेवलपमेंट, देन रिसेप्टिव इंटेंशन, देन रिसेप्टिव कम्युनिकेशन एंड देन स्लोली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। बहुत बार ये चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, और फिर जस्ट आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट की जगह पर विजुअल अटेंशन क्रिएट करके देखो मुझे, लुक एट मी एंड लुक सम काइंड ऑफ वियर्ड थिंग्स डूइंग। बच्चा देखना तो शुरू कर देता आपके पास, लेकिन वो जो देख रहा है वो कितना परसीव कर रहा है ये हम नहीं समझ पाते हैं। दैट्स व्हाई द ऑटिज्म इज नॉट क्यूरेबल एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच डिले एंड ऑटिज्म, है ना। सो हायर फंक्शंस आर डेवलप्ड इन स्पीच डिले बट दे आर पुअरली डेवलप्ड इन ऑटिज्म। हायर फंक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मेमोरी, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ओरिएंटेशन, थिंकिंग, इमेजिनेशन, इमोशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें ये है हमारा अभी का फिलहाल का developmental aspects. If you want to learn more about it, I have taken a big lecture on it. डेवलपमेंट वर्सेस एकेडमिक्स के में इसमें ये सारी एस्पेक्ट्स और मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, कैन गो एंड लुक एट इट। सो ये सारे हायर फंक्शंस हैं, इसमें कहीं पर भी रीडिंग, राइटिंग और वो चीज़ें नहीं लिखी है, कहीं पर भी वोकैबुलरी ये चीज़ नहीं लिखी है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज इट कैन बी you make sound and I understand the sound, that's a language for the person, but it's really very important to understand कि वो जो aspect of psychosocial development वो कहाँ पर वो बच्चा वहाँ पर रह रहा है वो हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। Then reason behind speech delay are dyspraxia, apraxia, or it can be hereditary or it can be some oral motor issues होते हैं। लेकिन बच्चा नहीं बात कर रहा है तो हम लोग सिर्फ देखते हैं कि चलो बात नहीं कर रहा है तो डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया होता है तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लेकिन बात करना, मैं आपको सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्या आपको किसी ने चलने के लिए सिखाया? ओके, हाँ, माँ बाप ने हाथ पकड़ के चलाया, लेकिन अगर नहीं भी चलाते ना तो भी आप चलते, क्या किसी को चबाने के लिए सिखाया? अगर नहीं भी सिखाया होता तो भी हमें ऑलरेडी इट इज रिटन इन द जीन्स, इट इज रिटन इन द क्रोमोसोम्स कि द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, प्यूबर्टी इज गोइंग टू हैपन, दांत आएंगे ही आएंगे, वो हाथ की मूवमेंट्स होगी, वो सारी चीजें होने वाली है, ये हमारे जीन्स में ऑलरेडी लिखा गया है कि अगर वो ह्यूमन का बच्चा है तो ये सारे 10-15 महीने में दांत आएंगे, वो चलना शुरू करेगा 12 से 15 महीने में, वो बोलना शुरू करेगा, शायद वर्बलाइजेशन, नॉट बोलना, वर्बलाइजेशन शुरू करेगा शायद 1 साल से 2 साल 2.5 साल के बीच में, and then the communication will happen after 2.5 years. Communication is a part and parcel of the overall psychosocial development. So ये एक physiological development है। Speech is, I also believe that speech is a physiological development. Okay, but it is not able to come out. वो बाहर नहीं आ पाती because of 2 reasons. One is the inner nutrition. Like for example, अगर झाड़ का पौधा है, पौधा है और वो पौधे को अगर हमने पानी नहीं दिया और उसको उतना खाद नहीं दिया तो वो उतना बढ़ेगा नहीं। तो जो स्पीच डेवलपमेंट के पीछे जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है कम्युनिकेशन, वो होता है इंटरैक्शन, वो अगर उतना ज़्यादा नहीं मिला और वो ना मिलने के पीछे कुछ डिस्फंक्शंस है, उसके वजह से वो चीज़ें डेवलप नहीं, और इंटरैक्शन डेवलप ना होने के वजह से ये पौधे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए वो पौधा डेवलप नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कुछ अगर मैं उसको बोलूँगा कि नहीं, पौधा डेवलप होना चाहिए, पौधा बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके प्रीरिक्विजिट्स पर अगर मैंने काम नहीं किया तो ये पौधा बड़ा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल वे से होगा, लेकिन नेचुरल वे से नहीं होगा। एंड आई बिलीव ऑटिज्म इज नॉट आर्टिफिशियली मेड डिसऑर्डर, ऑटिज्म
is a natural process of neurological dysfunction. अगर ये natural process of neurological dysfunction है, तो we have to deal it with the naturally only. We should not cross the stages of the development. We should wait for one stage of the development to get matured, then let the another stage of development come. Let's mature it, go slowly, go steadily, and always in every stage of development में आपका enough communication, enough interaction, enough play, enough intentions, right, pass on or लेंगे, so every child can speak, and I have seen the children can speak after the age of 8 also, when the parenting changed their own way of dealing with it. So autism is not a speech dysfunction, it is a communication dysfunction. You work on communication, speech will automatically follow the way, and in that process, if the speech is not coming, yes, there is a dyspraxia, there is a apraxia in few autism kids, then definitely the speech therapy should come in at that time. With the speech therapist, minimal efforts will create a maximum outcome, and then the child will definitely start speaking like a mother tongue what you are talking at home. But ये सारी चीजें डेवलप नहीं हुई, और पहले से अगर आप उसको ये बोलो वो बोलो और कुछ चीज़ों से उसको स्टिमुलेट करके अगर उसको बुलाने की कोशिश करो, तो ये बच्चा बोलेगा ज़रूर, लेकिन वो बच्चा अगर कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ है, उसके प्रीरिक्विजिट्स डेवलप नहीं हुए, तो डेफिनेटली वो बच्चा लाइफ टाइम तक स्टीरियोटिपिकल वे से ही बात करेगा और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन से ऑपरेट करेगा, इंटेंशन से ऑपरेट नहीं कर पाएगा. ओके, ना तो वो सामने वाले के इंटेंशन समझ पाएगा, ना तो वो अपने इंटेंशंस कम्युनिकेशन में या राइट एक्सप्रेशंस या राइट वर्ड्स को के माध्यम से नहीं पास ऑन करेगा. और इसको हम लोग कहेंगे ऑटिज्म इज नॉट could not get cured. So the reason behind speech delay, even though if it is speech dyspraxia and apraxia, ये ऑटिज्म में भी हो सकता है, लेकिन ये डिस्प्रैक्सिया और एप्रेक्सिया से पहले आपको बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट, बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन, बहुत ज़्यादा प्ले एंड जो एक इंटेंट होता है, वो रैपो होता है, वो डेवलप करने के बाद ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. ओके, एंड even ethical speech therapist or ethical speech and language pathologist will do consult with autists. We want a good eye contact. We don't want a visual attention. We want a good eye contact where the child is able to receive my intention, and he is able to give that intention through the eye contact, not just by the behavior. The intention is like a child is looking at you and then starts crying and then just looking at you and then start doing this. This is eye contact. Guy, I'm angry on you. Why you're doing this with me? Why you're not giving my deserving need? When the child looks at you and shows some behavior, eye contact is developed. Child is transferring his intention to you. It is a valid communication. But when the child is just looking here and then and just doing this and doing this and not giving you eye contact, that means child is not ever connected to you and is not passing on intention. He's just into his own meltdowns. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी बोली है कि जब बच्चा आई कांटेक्ट करके जब उसके हैप्पीनेस, उसका एंगर, उसका एजिटेशन दिखाता है, that child has a more better way of going ahead in the development than the child who's just showing rage or anger by not looking at you. जब बच्चा आपको देखकर सर पटकता है, that's a wonderful thing. He is able to convey his anger through his eye contact. लेकिन अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, और जो बच्चों में सिर्फ विजुअल अटेंशन डेवलप हुआ है, वो बच्चा सिर्फ पढ़ाई के वक्त विजुअल अटेंशन करेगा, मेरे पास देखो मैंने कहा देखा, लेकिन जब वो कुछ चीज़ें बिहेवियर दिखा रहा है तो वो आपको आई कांटेक्ट नहीं करेगा. ये एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, वेदर माई चाइल्ड हैज डेवलप आई कांटेक्ट और नॉट. तो whenever there is a very high excitation level, be it anger, be it these things, child will give you eye contact, and that's, take it as a very positively and understand and tell the baby ki beta, I understand, I am really extremely sorry that you are angry on me, I'm sorry for that, and then identify what exactly you could not, what deserving need we could not give, and then try to provide it. But don't provide unnecessary undeserving needs, where sometimes the child will do that because we have provided undeserving needs in the behavior. अगर हमने पहले उसको दिया गया है तो शायद तभी भी हो सकता है बच्चा करे. लेकिन यहाँ पर
इंपॉर्टेंट चीज है आई कॉन्टैक्ट, यू नो. So we were at the topic called reason behind speech delay, dyspraxia, apraxia and these things. तो dyspraxia, apraxia तभी आना चाहिए जब एक्चुअली उसका जो बेस है वो डेवलप हुआ है. उसके बाद डिस्प्रैक्सिया पर काम करो, वो बहुत फास्ट डेवलप होगा एंड उसके बाद बच्चा बहुत एफिशिएंटली बात करेगा. वो बात होगी आपके मदर टंग जैसे, ना कि कार्टूनिस्टिक और वो चीज़ें होगी. देन reason why an autism child can't speak is due to auditory processing dysfunction and not dyspraxia. This is really very important. I am trying to explain you. It is speech dyspraxia कि वैसे बच्चा नहीं बात कर रहा है, वो speech articulation dysfunction दिखाएगा, या शायद वो नहीं बोल पाएगा, maybe because of the parent is expecting he should speak properly and that's why the child is showing anxiety. But in autism the child is not speaking because the prerequisites of the speech होता है sound, और वो sound को ही वो ठीक से अगर एनकोड नहीं कर पा रहा है, उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है, उसको मॉड्यूलेट नहीं कर पा रहा है, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, और वो अप्रोप्रिएट चीज़ों को या विजुअल्स से वो साउंड को अगर इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है, दैट इज ऑटिज्म. ओके, तो ऑटिज्म में आने वाला स्पीच डिसफंक्शन अलग है. ओके, उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर अलग है, और स्पीच डिले में आने वाला इटियोलॉजिकल फैक्टर अलग है, जो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि सही इवैल्यूएशन करके उसका साइकोसोशल स्टेज को काम करके, उसके सेंसरी प्रोसेसिंग डिस्फंक्शन पर काम करके, जब ये डिस्फंक्शन लेवल एक्सप्लोरेशन लेवल की तरफ जाती है, तब हमें उसके ऊपर काम करना होता है. मेरा स्पीच डिस्प्रैक्सिया, जस्ट वर्क ऑन दोज oral placement therapy, oral motor techniques, and then the child will start speaking alone. लेकिन there are so many parents have seen that पिछले 2 सालों से oral placement therapy चल रही है and we are waiting for the speech, we are doing working on a speech. That means आप काम तो कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन सही जगह पर नहीं कर रहे हैं. Somewhere the child is having some dysfunction. Before that you have to before the level of oral placement therapy and all those things. Okay, so 2 लेवल होते हैं, स्पीच डिस्प्रैक्सिया एंड एप्रैक्सिया स्पीच डिसऑर्डर. ऑटिज्म में होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसफंक्शन. ऑटिज्म के बारे में सिर्फ बोलेंगे अभी. ऑटिज्म में होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसफंक्शन, ऑडिटरी मॉड्यूलेशन डिसफंक्शन. ऑडिटरी प्रोसेसिंग बच्चा बात नहीं करेगा बिकॉज ही इज नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ अ सिग्नल. ऑडिटरी मॉड्यूलेशन डिसफंक्शन 2 चीज़ें दिखाएगा. वो इकोलालिया दिखाएगा, वो शायद आपको इमिटेट करेगा, आपके टोन को इमिटेट करेगा, कार्टूनिस्टिक टोन को इमिटेट करेगा, यू नो, बिकॉज वो सिर्फ मॉड्यूलेटेड साउंड्स को सुनने की कोशिश कर रहा है. ओके, और वो स्टीरियोटिपिकल वे से बात कर रहा है इसका. और एट द सेम टाइम वो ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी भी अगर दिखा रहा है, तो वी शुड नॉट वर्क ऑन इकोलालिया, वी शुड नॉट वर्क ऑन एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, वी शुड वर्क ऑन ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी बाय वर्किंग ऑन vestibular functioning and not by working on so called वो कुछ तो म्यूजिक सुनाया जाता है, कुछ तो वो. That's not, you don't have to stop the auditory hypersensitivity. You have to convert the auditory hypersensitivity by letting the brain's vestibulocochlear area understanding the different wavelengths with the movements. That's really very important. Okay, so that's why body awareness is very 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 closely associated with the visual exploration and auditory exploration and auditory modulation. Okay, so when the mild auditory modulation enabled cases shows robotic stereotypical speech and echolalia in autism, वहाँ पर हमें ये देखना होता है कि वो modulation dysfunction पर काम करो. Echolalia will automatically get converted into the expressive communication because by the time auditory exploration will develop, विजुअल एक्सप्लोरेशन ऑल्सो वी हैव टू वर्क अपॉन, बिकॉज आई टोल्ड यू विजुअल एक्सप्लोरेशन अगर वहां पर काम नहीं है तो पहले उसके ऊपर काम करके रखो. अगर विजुअल एक्सप्लोरेशन अच्छा है तो चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग इंटीग्रेटेड इन द फैमिली, इंटीग्रेटेड इन द सोसाइटी. हमें उसको पुश करने की, हमें उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा है हमारे जीन्स में. जीन्स अपने हिसाब से डेफिनेटली काम करेंगे, लेकिन उसको काम करने के पीछे का जो प्रीरिक्विजिट्स है वो अगर डेवलप नहीं हुआ है तो जीन्स काम नहीं करेगा. अगर वो रिले रेस में हुसैन बोल्ट वहां पर खड़ा है, लेकिन पहले वाला भागने वाला जो रेसर है, वो रनर है, अगर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया तो हुसैन बोल्ट को वो हाथ में बैलेट मिलेगा ही नहीं और वो रेस शुरू ही नहीं कर पाएगा. तो स्पीच वो हुसैन बोल्ट जैसा है,
सोशल इंटरेक्शन वो उसेन बोल्ट जैसा है, वो ऑटोमेटिकली आने वाला है और वो भागने वाला है उतना फास्ट, लेकिन वो एटलीस्ट बैलेट उसके हाथ में आके देना, ये होता है बेसिक वर्किंग ऑन द न्यूरल फंक्शनिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, वो बैलेट आने वाला क्या किया वो नहीं करा, हम लोग हुसैन बोल्ट को धक्का मार के उसको आगे भेजने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं तू क्यों नहीं भाग रहा है, तू क्यों नहीं भाग रहा है, ओके। एंड देन द पेरेंट कम्स टू मी सेज ही कैन स्पीक अ लॉट बट ही स्टिल नॉट कम्युनिकेटिंग, व्हाई? Because the Usain Bolt did not get that ballot, did not complete the race, the previous stages ने race को complete नहीं किया है, that's why the child's speech Usain Bolt, communication Usain Bolt, interaction Usain Bolt, वो अपने दिशा से अपने अपने डायरेक्शन से भाग नहीं पाता है, या शायद एनवायरनमेंट के हिसाब से वो नहीं वर्क कर पाता है, ओके। थोड़ा सा आज का लेक्चर मैंने बहुत इंटीग्रेटेड वे से मैं ले रहा हूँ, बिकॉज आई फील the audience who's listening to me has already शायद मेरे पहले lectures सुने हैं, ये मैं presume करके चल रहा हूँ, because what I got information from Harshali that okay there are parents who have already listened to you, and then let's talk about more advanced and more things और more in depth, more technical थोड़ा सा बात करेंगे, तो definitely it will be more fruitful to all the parents. Then comes this is very 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 important, why autism is not curable. autism curable क्यों नहीं है, इसका मतलब autism curable है, ओके। क्यों नहीं है, 98% क्यों नहीं है, because of these two major three reasons. One is difference between algorithm of speech development in autism and typical development is the reason why autism is not curable, okay. algorithm in speech is different, autism का सबसे पहले होता है autism sensory processing, sensory exploration gauge into the sensory motor stage of development, then goes to the imitation phase, and n number of things develops. Speech delay is just a speech dyspraxia is just a motor problem, और ये motor problem को autism के बच्चों को जैसे motor problem को लेकर हम लोग बुलवाने की कोशिश करते हैं, that means we did not follow the proper neural development process, और इसीलिए एक्टिविटीज और प्रोटोकॉल्स ये घातक है, ये प्री मेडिटेटेड प्रोटोकॉल्स घातक है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोसोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. देयर आर सो मेनी लेमन पीपल आर टॉकिंग, इसको ये करो, उसको ये 10 चीजें दे दो तो बच्चा ठीक हो जाएगा, उसको वो 20 चीजें देखो बच्चा ठीक हो जाएगा. आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दोज. अगर कोई एक ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर किसी गांव में जाता है, अपना प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, तो गांव के बहुत सारे लोगों को फ्रैक्चर होता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम होता है, वो अपने अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं. तो वो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलेगा कितनी ये बहुत गलत लोग कर रहे हैं. गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राइट प्रोफेशनल नॉलेज इज नॉट गोइंग टू द कोर ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई देयर आर फ्यू इंटेलेक्चुअल पीपल आर टेकिंग डूइंग द वे दे अंडरस्टूड, कि थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से जो भी उन्होंने अंडरस्टूड किया और वो अगली सोसाइटी को पहुंचा रहे. बट टेक इट वेरी सीरियसली in this today's social media. Dr. Sumit can reach to Nigeria, so Dr. Sumit can reach to this thing also, and ethical profession can reach to any core. This thing is not about Dr. Sumit, but nowadays the non-ethical people are reaching to very fast to the core, and then because of the so-called the emotional connection between a parent and a parent, lots of misunderstood, less understood, लेस एजुकेटेड, लेस दिस थिंग्स. अगर मैं आज भी शायद अगर किसी को मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कि ओटी का हमें 6 महीने का कोर्स करना है, it's not like that. I'm still learning occupational therapy, and if you really want to know what OT is, just read the book called Willard and Spexman. It's a US based book, and then you will understand exactly what OT is. So it's the autism is not just a speech delay. Autism is not just a child नहीं कर रहा है. चाइल्ड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ फेस वैल्यू है. वो अंडरलाइन 10 प्रॉब्लम्स की, वो 10 प्रॉब्लम्स के ऊपर ठीक से काम करो. चाइल्ड करना ये उसकी फितरत में है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का अधिकार है, ये वो ऑटोमेटिकली करेगा. उसके ऊपर आपको कुछ भी पुश करने की जरूरत नहीं है. बच्चा अपने आप बोलना शुरू करेगा, अपने आप कम्युनिकेट करना शुरू करेगा. ओके. नेक्स्ट इज सिम्टम्स आर ट्रीटेड एज डिसफंक्शंस रादर the markers of underlying dysfunctions. So symptoms को ज़्यादा stake दिया जाता है. Symptoms is taken as a problem.
symptoms are not problem. Symptoms are very important to understand the underlying problem. अगर सिम्टम मलेरिया में नहीं होता तो शायद मलेरिया से मरने वाले लोग 10 में से 8 होते. ओके, सिम्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये सिम्टम एक मार्कर की तरह काम करता है, एक डायरेक्शन की तरह काम करता है. जब मैं अंडरलाइन एरियाज पर काम करता हूं तो वो बच्चे की डेवलपमेंट आना शुरू हो जाती है और उसी से रिलेटेड जो सिम्टम है वो ऑटोमेटिकली वैनिश होते जाता है. वो सिम्टम को दबाने की, सिम्टम को कम करने की कोई भी कोशिश नहीं करनी होती, वो अपने आप चला जाएगा क्योंकि डेवलपमेंट अपना रास्ता खुद से ढूंढ लेती है वहां पर. ओके, so and it's already given in the genes. I'm saying again and again, we are the human gene. It is already written कि क्या किसके बाद क्या होने वाला है. अगर आप ठीक से वो स्टेज को फुलफिल करो तो अगली स्टेज नॉर्मल होगी, लेकिन पहली स्टेज को फुलफिल ना करके अगर अगली स्टेज को ट्रेन करो तो उससे शायद वो ट्रेन भी हो जाएगी, लेकिन उससे अगली स्टेज डिसफंक्शन में चली जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट एक एल्गोरिदम मांगता है, एक डेवलपमेंटल स्टेजेस का एल्गोरिदम होता है. ओके, सो मेरे एक लेक्चर में मैंने ये भी बोला, हैंड फ्लैपिंग इज नॉर्मल फॉर 8 मंथ्स किड, 6 मंथ्स किड. शायद 1 साल 1.5 साल के बच्चा एक्साइटमेंट में भी ये करता है, वो नॉर्मल है, वो एब्सोल्युटली प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेकिन 2.5 साल का बच्चा अगर फ्लैपिंग करता है, 3 साल का बच्चा अगर फ्लैपिंग करता है, तो समवेयर rather than taking it as an abnormal symptom, we should say the child is, why the child is operating from the 8-month-old developmental stage. That means what all aspects of development he did not fulfill over there, and that's why he's operating normally at that 8-month stage. So I will say why the child is normally showing hand flapping, normally he is not speaking, normally he is not communicating, normally he is not interacting, because with respect to that the actual social stage. Okay, so as a professional I would like to take it as a very normal thing. Okay, you're flapping to show excitement, that means you're not, the brain is not connected to the thought process area, to the higher function area, and that's why the brain and body is just showing this particular thing which even a 6 or 8 months old child shows. Okay, that means I have to work more on brain and body awareness, and then brain and body awareness के साथ मुझे sensory explorations पर काम करना है. उसके बाद जाके जो हायर फंक्शन डेवलप होंगे उसको मुझे शायद प्रोवोक करना है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ताकि वो बच्चे के जो स्पीच एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन और द सोशल इंटरेक्शन will become the face value of the underlying orientation, thinking, imagination, emotion, play stages, psychosocial stages, and his intellectual functioning, मैं कहूँगा. So please don't work on symptoms. Please, if the child is not speaking, don't try to work on his speech. Try to understand what is the underlying factor over there. Layman people, treating autism like cognitive dysfunction without understanding its core neurological dysfunction and treatment algorithm. Autism is not a cognitive dysfunction. It is not an intellectual dysfunction. It is somewhere the child is not able to encode the information from the environment. शायद बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है. बहुत बार क्या होता है, जब हम उसके कॉग्निटिव फंक्शनिंग देते हैं तो बहुत ही कुछ विजुअल स्किल्स यूज करके, कुछ ऑडिटरी स्किल्स यूज करके बच्चा वो चीज़ को इतना रट लेता है कि उसको लगता है कि यही नॉर्मल है. और वो रट तो लेता है, लेकिन वो रटी हुई स्किल को वो एक्चुअली नॉर्मल डेवलपमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाता. द चाइल्ड हु इज एबल टू मेक लॉट ऑफ पजल और 100 पीस पजल, बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये पापा का चश्मा है, ये मम्मा का बैग है, ये पापा की चप्पल है, ये मम्मा की चप्पल है, और वो अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो उसका रिसेप्टिव कम्युनिकेशन डेवलप ही नहीं हुआ. तो वो 100 पीस पजल में मास्टर करके उसको क्या फायदा. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर एक्चुअली नहीं काम करना चाहिए ऑटिज्म में. एक्चुअली कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर अगर आप साइकोसोशल स्टेजेस से पहले काम करेंगे तो ये ऑटिज्म को क्योर करने के आप बीच में आते हो. ओके, भले बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, सिर्फ उसके साइकोसोशल स्टेजेस पर ध्यान दो, उसके कॉग्निटिव स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स पर ध्यान मत दो. वो बच्चा आपके लाइफ टाइम के लिए एक नॉर्मल फैमिली मेंबर की तरह, एक इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह, अगर वो सीवियर एंड प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिस्फंक्शन नहीं है तो वो बच्चा विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ बिहेवियर्स
a wonderful natured person, a wonderful integrated person to the family, a very nice personality, very nice helping personality, self direction करने वाला, सोचने वाला, इमेजिन करने वाला, क्या करने से क्या होता है वो करने वाला, मम्मी के पापा के साथ बहुत अच्छे से रहने वाला, उसके उसके ऊपर घर छोड़ के मम्मी पापा दोनों भी काम करके करने के लिए जा सकते हैं, ऐसा बच्चा हर एक घर में हो सकता है. If we stop working on those cognitive skills, if we stop working on the academic skills, and if we keep working on the psychosocial stages of the development. That's it from my side. I think uh, uh, we have in today's lecture. I hope that I could establish an understanding in the listener's mind what exactly is the social communication delay, what exactly is the social communication dysfunction, what is the speech dysfunction, and I try to express more and more about the autism treatment, exactly क्या होनी चाहिए और क्या क्या होता है और क्या नहीं. I mean, what is supposed to happen but what is not happening, and what does not should happen, and what we try to do. Okay, so uh, we can take questions on these particular things. Over to you, Harshali madam. Yes, I think that was a wonderful eye opener for everyone. I'm getting so much messages from parents. I would request parents to raise their hand for the questions, and we will unmute them one by one, because there are so many questions while going on the session, but some are answered, some are not answered. So we will try to take maximum in given time. Yeah, so I will start with Abhijay. You please unmute yourself and ask your question. And please keep these questions related to today's topic as far as possible, because I know we have various kind of questions related to occupational therapy and all, but it's difficult to answer the particular question, I mean, to related to your child only. So keep all questions in rational form, so can answer them like quickly. Yeah, Abhijay, you can go ahead. Yeah, hello sir, good morning. My son is 8 years old, and he is detected ASD mild at the age of 4.5. Actually, my son has a big medical history. He has a tetralogy of Fallot, and he had gone through an open heart surgery at the age of 1.3. Before that, he started talking. He started calling me mama. If someone is asking call your mama, he starts calling. His eye contact was up to the level, but for his medical issue we couldn't give him to play because his oxygen level gets down and he was in oxygen. So for his health sake, he was in only computer and mobile screen and TV screen. And after he was operated at the age 1.5, then also for his medical reason, he was in mobile screen for his health seeking. Then we came to Pune and we have come to know he has hypothyroidism. The problem is hypothyroidism, when it was detected, he can understand everything. He gives eye contact to us. But as we are not medical person, we couldn't understand that he is not giving eye contact to the unknown person. But if someone he knows, he gives that eye contact, but he couldn't say. After the operation, he couldn't say a word, not a sound comes. And he was in ventilation for 5 days. After that, we started his thyroid medications. And at the age of 4, the Dr. Bhaman Khadilkar, he is in Pune, he told, I don't think he has any autism spectrum, but as his speech is not coming, he can understand everything. Better go for a developmental pediatrics. And we go and we come to know that, yes, my son has a mild spectrum disorder. Now he is 8. After 1 year of OT and speech, his speech has come. My question is to you. Now my son can understand everything. He communicates with us. His eye contact is level. My question is, he is in autism or he is in spectrum delay? How I will classify him? Wonderful question. Or
since we say there are two different things: autism coming after organic brain dysfunction, and autism coming with a inorganic, or there is no absolute problem in the brain and the child is showing autism, and there is some problem there with epilepsy and some kind of epileptic things are there, or some kind of a insult to the brain happened and there is autism. Okay. And तीसरा थिंग होता है, the child had developed a kind of a medical condition जिसके वजह से the brain went into the shock phase. I repeat, brain goes into the shock phase and brain starts operating from the regression. Regression means there is a trauma to the body, so automatically the brain's focus from the psychosocial stages वो focus हो जाता है to its own health and its own survival. Okay, and when this happens, definitely child loses all the attained psychosocial stages, attained milestones, वो बच्चा lose कर देता है, and then the child starts showing autism like symptoms. जब बच्चा प्रोफेशनल के पास जाता है, प्रोफेशनल बोलता है कि ओके ये ऑटिज्म जैसा है, and then start working on it. On that time, rather than treating him like autism, if you would have given attention to the psychosocial stages of the development, where exactly my child is operating from, what exactly my child is operating like a normal child, वहां पर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 4 साल का बच्चा है लेकिन 18 महीने का है, लेकिन 18 महीने में भी कंटामिनेशन है, लेकिन उस वक्त आपके बच्चे में वो कंटामिनेशन शायद नहीं दिख रहे थे, उसमें सिर्फ डिलेड साइकोसोशल स्टेजेस दिखती होगी, ऐसे में मान के चलता हूं, because and all the attention was towards health, all the attention was to giving him all the comfort and all those things, so he did not get that much of interaction, he did not get that much of opportunities to explore the environment, and then the psychosocial stages did not get that much of nutrition to come up out of it, and then the brain went into the comfort zone, okay, of the dependency level. Okay, this is something happens. I have seen in n number of cases who come with some kind of a early medical issues, and then the child shows this. Okay, now, okay, अगर वो अभी बात कर रहा है, you don't have to see कि वो क्या बात कर रहा है, you have to see, आपको ये देखना है कि वो अभी जो बात कर रहा है वो कौन से नॉर्मल एज स्टेज की तरह वो बात करता है. ओके, और अगर वो उसमें भी अगर कुछ रोबोटिक बातें कर रहा है, if he's doing some robotic speech or is showing some kind of auditory dysfunction, then somewhere the brain has acquired the dysfunction over a period. So you, rather than working on his communication and vocabulary on all this language, you should work on his auditory exploration. Work on auditory exploration. Try to eradicate all those sensory dysfunctions, and believe me, you don't have to work on communication language. Your child will automatically get the intentions from you, and he will start filling his mind, filling his overall higher functions normally. So yes, this kind of cases, they are not actually autism, but they show autism-alike symptoms because the brain has gone into the regression. And to all of you, I would like to say, autism is not a disorder. Okay, autism is a dysfunction stage of development, जहां पर development आके रुक चुकी है. The development is stopped. So even there are many people कि madam, I have explained you the answer कि exactly what you're supposed to do, but in that I would like to just take this topic ahead. Suppose that the child is stuck at the 2-year stage, or now he's 8 years and he must be speaking like a 2.5-year-old child or 3-year-old child, and that can be his social stage of development. Okay, many people do. There are 2 ways of going ahead. Operate the child from the social stage of development and then interact with him, and slowly interact, and then the child will come, and then child will start behaving like a normal 4.5-year-old child. Okay, this is how we should go. But in that 2.5-year-old stage में अगर हम लोग सिर्फ उसको train करते जाएंगे, then the child will be trained. But on the test, on the objective test, the subjective evaluation पर वो बच्चा behave करेगा 2.5 साल के बच्चे की तरह ही. That is somewhere should not happen. So don't try to train your child. Identify, understand which stages he did not complete,
with psychosocial stages is still it's stuck on, and then over there, if any dysfunctions are there, just work on it and then connect to that psychosocial stage of development and the places to go, the and if he's and then leave it to his intellectual functioning. तो उसका intellectual functioning अगर अच्छा है तो he will find the places. Okay, so प्रॉब्लम कभी होता है जब बच्चा एक्चुअली कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाया एंड देन ही इज हैविंग ऑटिज्म एंड देन ही स्टक ओवर देयर. दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम एंड ओवर देयर ऑल दोज इवैल्यूएशन जो हम बोलते हैं वो हमें करने जरूरी होते हैं. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. Okay, next question. I would request Ms. Reshma Sheikh to unmute and ask a question. Yes, sir. I just want to give a little information that the child is 8 years old. When he was 4, जब उसको डॉक्टर ने बोला था कि he is having only speech delay, right? तो हमने क्या किया कि speech delay का issue है, तो ठीक है, we are going to do. तो we have put him OT, speech therapy, सब डाला था सर. बट आफ्टर सम इयर्स उसका वो नहीं, थोड़ा बहुत ही स्पीच आया था. बट नाउ स्पीच 8 years का है, बट उसके अंदर स्पीच काफी अच्छा है एंड ही इज टॉकिंग सेंटेंसेस एंड आई कांटेक्ट वाज टू गुड. बस सोशल कम्युनिकेशन इज नॉट हैपनिंग और वो बैठा रहता है और दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं करने के लिए रेडी होता है. एंड व्हेन वी से कि नहीं टुडे विल नॉट गिव यू दिस, तो उसको इतना प्रेशर आ जाता है दैट ही स्टार्ट ममरिंग. स्लोली विंडो में जाके ही स्टार्ट ममरिंग. सो वी आर कंफ्यूज, लाइक उसका स्पीच का इश्यू डॉक्टर ने बोला था, बट यस वी सी के स्पीच तो है बट ना ममरिंग चालू हो जाता है एंड सोशल कम्युनिकेशन इज जीरो, लाइक नहीं करना है इंटरेस्ट. तो यहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर ने बता दे कि वक्त आप शायद आपने शायद कौन डॉक्टर थे मुझे नहीं पता, बट हु इज अ प्रोफेशनल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्रोफेशनल, बट let's understand it was not a speech dysfunction, it was more of a social communication dysfunction then and there only. Okay, and but what you have done, you worked only 7% aspect of the speech of the communication, which is you worked on a speech, you know. So social communication may 93% is non-verbal expressions. You exchange your expressions, you know, 93%, and only 7% matters what you speak with each other. लेकिन उसके बाद more focus was given on visual attention, more focus was given on how many words he can speak with proper making the this thing in a very close contact. Say apple, say banana. Okay, banana. So the child was given more attention to speak, to articulate, you know, but not much attention was given to his intention. Not many intention was passed on to him. And every time the environment worked on his performance. When you try to work on somebody's performance, that means you are judgmental. Either you are doing good or you are doing bad, but you are not connected to the person emotionally. Yes or no? When you say apple and child says apple and you are looking like that, okay, that means you are not connected to the child. You know, you're connected to the word what he's performing, and then the child all the time goes into that fear ki am I going to perform better or not. Okay, and वहां पर emotional connection या जो interaction जो होता है, जो एक belongingness होता है, वो miss कर देते हैं. For that I will tell you, please watch that lecture which I've taken, half an hour lecture in the Guwahati parents. You know, recently it's on there, it's there. Sushan can put the link over there. Over there I have explained what exactly is a parent-child bonding. You know, now coming to the speech, he must be knowing 1,000 words. Communication does not mean how many words you know. Communication means how many words you can interact with each other, you can associate with each other. Okay, when you try to flow a intention. I repeat, communication does not mean how many words you know. Okay, communication means how many words you can associate with each other, you know, in a particular intention. I'll give an example. Okay, apple, red apple. Okay, this is words, information.
Okay, okay. What is communication? Okay, red apple, mama, something I wanted. So the meaning to that red apple came because of my expression. Okay, maybe I'll give you another example. Elephant. Okay, cockroach. Okay, this is speech. Okay, but if I say, oh, elephant, I say, Bobri, cockroach, communication. So you understood what missed out in your child was receptive intention, did not get completed, and you just worked on piling up the words in his mind, and now the words doesn't want to listen to the expressions, and expressions never develop. Try to check whether your child is having some kind of a visual motor issues also. Thank you. Yeah. Next, I would request Swati Verma to unmute and ask your question, please. We'll take this last question because I have a case to attend. Okay, sure. Good afternoon, sir. We have got a lot of insight with your lecture. My point is that the psychosocial stages which you are talking about, actually, I feel with my experience of 2 years that this is actually something which we have missed out, and we are working in compartments. And the gaps, जहाँ से actually वो gaps शुरू हुए होंगे, वो gaps रह गए बीच में. That is why we are not able to integration नहीं है पूरा. That is why communication is not coming up. Yes. So I wanted to ask you, does working on primitive reflexes is the same as psychosocial stages, or it is different? No, not at all. Primitive reflexes is somewhere when the child is born. At that time, the brain is operating at this level. Okay, midbrain and below the pons and medulla level and spinal level. So these are the reflexes which receives the stimulus from the body and sends the signal to the body, and that's how the child starts moving the hands. The child doesn't know that I'm moving my hand. The hands are moving, the body is moving, is a reflex action. These reflexes are the bridge between brain and body. You know, slowly 14,000 movements happens through these reflexes. Lots of transitions of the movements properly happens in a particular way of development. We can say the child starts head holding, the child starts neck holding, the child starts showing the proximal stability, the proximal stability and distal stability and the proximal mobility, जिसमें रोल ओवर होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है. इसके बाद क्रॉलिंग आती है जिसमें डिस्टल मोबिलिटी होती है, डिस्टल स्टेबिलिटी होती है, प्रॉक्सिमल मोबिलिटी होती है. ये सारी चीजों का जो जड़ है वो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. ओके, सो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं TLR, टोनिक लेबिरिंथाइन रिफ्लेक्स, जो इंटीग्रेट होता है ATNR, एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, जो बॉडी के कंपार्टमेंट्स को अलग अलग करके ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन भेजता है. मैं ये बहुत ही लेमन तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम टेक्निकल ओवर हियर. ओके, तो देयर आर डिफरेंट हेल्प्स. So ATNR becomes one sided body is flexed, the another side body is extended. One side, the TLR says overall body either extended, whole body is either flexed. The STNR is half the compartment body is flexed and the distal part of the body is extended, and that's how the crawling, that's how the different transitions of the movement pattern happens. So that I understood. My only point is that we missed out on social. When this sorry to disturb. Body and brain develops, and then the brain creates now the visual area, auditory area develops a kind of a intention that I want to go there. I like that sound, or I want that visual. Then this primitive reflexes, integrated primitive reflexes, the cognitive area asks the body to move over there and try to take that object and develop the exploration. Now from here the psychosocial development starts developing. Okay, उसके पहले के जो होते हैं वो ओवरऑल एस्पेक्ट्स होते हैं जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में से बॉडी और ब्रेन का कनेक्शन किया जाता है. ओके, जिसका जो ओवरऑल पार्ट होता है सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ओके, सो जो मोटर एस्पेक्ट्स होता है वो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म या
मूवमेंट मैकेनिज्म या ट्रांजिशन पैटर्न से आता है, जो सेंसरी मैकेनिज्म होता है वो एक्सप्लोरेशन फेज में आता है. When more and more exploration happens, the psychosocial stages starts developing. So when an occupational therapist giving you an activity, give a child crawling, or give a child one leg standing, or give a child jumping, you need to understand what are the psychosocial stages the child is actually into, rather than just taking it as an activity. Okay, attention create करना है तो उसको jumping, Yes, sir. थोड़ा सा crawling दे दो, थोड़ा सा one leg standing दे दो, and then you are messing up all the reflexive mechanism and messing up all the things which are actually becomes the prerequisites of the psychosocial development. That's So why actually that is happening. How do we decide actually this is what is happening? It's all mixing up because I think the socio psychological stages which you are telling that we need to understand, primitive reflexes comes much before that. And psychosocial stages का जो बता रहे हैं algorithm and all, do we have a flow chart, simple flow chart for us to understand that where our child is and where we are missing up, because we are wasting our time from so many years on working on blindly on just few inputs. So if there's some algorithm or some structure which we can understand, if you can please share it. Yeah. So now different scientists have given different psychosocial stages. Erik Erikson's given has a different stages. Piaget's psychosocial stages are different. Play stages are different. Okay. Then Sally Goddard has given different primitive reflexes and how the higher functions are developed, and if they are not developed, then how the things gets affected. Then Freud has given a psychosexual stages of the development. The child is touching his private part. Sometimes we have to go to the psychosocial stages of from the Piaget or from the Erik Erikson's theory, or sometimes we have to follow the Freud, who said there is a gratification the child is getting because the child is not getting it. So even if I tell you all the stages, there are different scientists have given different ways of psychosocial stages. Now when I come as a professional, I have to see I have to observe all these things, and which theory actually work in that particular child, that I have to work upon. Okay, I've given all the names, go check it out. Even Jean Ayers has given different levels of phylogenetic and ontogenetic developmental pattern. Go through that. If you get some idea, definitely it will be helping you. If you are confused, come to me. I will guide you how we should go ahead in that. Thank you. Okay, I think you don't know. I want to take further questions, but due to lack of time, I would suggest. Yeah, sorry. So we will not take questions now due to lack of time, but I'm putting a form, Google form in the chat box. You can fill up your questions there and CRC team will get back to you on that question for sure. Sorry, it's not possible to take all your questions on the live session. And I'll give that 2 minutes to take the links for the questions, and I'll post it in groups also. So if anything, you can come back to me or CRC, like these are their numbers, and sorry, in the initially that PPT could not move, so I'm just displaying it once again, that they have centers in Navi Mumbai, Thane, and Mumbai and Nagpur. So if you want to connect to them, you can fill up the form and you can connect on these numbers. And I would like to thank you so much, Dr. Sumit Shinde and the CRC team, to organize and to help us with this wonderful and very important topic. I hope, with all the feedback I'm getting, that this was an eye-opener and really informative session for all of us. Thank you so much, sir. Thank you for inviting. It's always great to connecting parents through SNIC, because there is a bridge. You are creating a bridge between professional and the parents, where you are creating an amazing awareness. I would like to congratulate to SNIC overall SNIC team. There is only one concern, everybody. Every problem has its own solution. Only ask right questions to the problem rather than falling straight away into the solution. When you ask right question to the problem, it is always when a parent comes to me and says, yeah, I'm not able to connect with my child is absolutely fine, I believe that child gets cured in next 6 to 8 months only.
But if someone is saying my child has a problem and I am right, then somewhere the child may take years and years. So every problem in the world starts with me first. Every problem, how much change I should create in myself, how much I will be ready, so that I will deal with my problem, how much I can create changes in me, where I have to develop myself. Maybe talking is my paradigm, maybe playing is my paradigm, but if it is important for my child, then I am ready to change myself. If every parent takes it in this way, then every child will develop social interaction first, then communication as the second part. Third thing will be the speech and overall communication development. Fourth thing, you don't have to look at the stereotypical behaviors, because the therapist will nicely able to take care of it, or you don't have to take care of it also. The child will absolutely be fine with this particular things if you follow the right algorithm with respect to psychosocial stages of development. Thank you. Thanks a lot for calling. Thanks a lot, team CRC, Sushant, Dr. Saumil, Dr. Nikita. You are the strength behind these lectures. I am alone is nobody, but because of you, I get a strength, and I am able to deliver these topics. And because your studies, your observations in the cases, your observations in daily in centers, we are seeing these people do a wonderful observations. We do survey and we understand exactly what is the problem we are facing in the society, and what problem we can how we can cater it. And that's how I develop my lectures. So kudos to you guys. Kudos to Harshali. You're doing an amazing job. Keep continuing this. Thank you, Brian. Brian, I haven't seen Brian also. Good. Have a nice day and have a nice weekend, everyone. Enjoy your parenting. Enjoy your childhood. Thank you. Thank you so much, sir. Actually, I again want to mention those videos you have mentioned के पहले जो हो चुके हैं webinars and all. You can always go to SNIC Rehab Foundation's channel and you can watch those videos for your references. So it's all there, guys. Just go through it and understand it. Yeah, Brian, you want to say something? Yes, in fact, it's always a pleasure to listen to Dr. Sumit. It's always there is something that is missed out from us as parents. But as a parent of 2 kids on the spectrum, I'd like to also mention, since there are a lot of parents here, is that we as parents, there are a lot of doctors who are created on WhatsApp groups. As well as Google Baba is also there, who is enlightening all of us with a lot of information. But then ultimately what we all need to understand that every child on the spectrum is different. It is all has to be basically a holistic approach wherein professionals like Dr. Sumit, parents, teachers, caregivers, when we all of us work together with a holistic approach, only then things will work out, If we just try to just look at only success stories and ask, what is the medicine that you have given to your child, and I will also give it to the same child, it will never work. Considering, as I said, every child is different. So be positive, and yes, good things will surely happen. Believe in your child, believe in the therapist, believe in your doctors, and do the best. And as we say, Upar wala hai, he will do the rest. Thank you so much, doctor. Thanks, Acharya. Thank you, Brian. Thank you. Thank you so much, parents. Thank you for attending and have a good weekend. Bye-bye. Yeah.